So we were discussing about the Parliament chapter, right? Yesterday. Okay, right. So you must be remembering that in this chapter we have already discussed the composition of the Parliament, which consists of the President and the two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, right? It is Article 79 that speaks about the composition of the Parliament in India, right? And we have borrowed the parliamentary system from the British system, right? So that's there. That is called the Westminster system also, right? And we also discussed that of the two houses of the parliament, the upper house, which represents the federal character of the country, that house is known as the Council of States, right? But in 1954, that house got the Hindi name, that is the Rajya Sabha. And the Council of States is known as the upper house also, right? It is equivalent to the House of Elders in the British system, okay? It is equivalent to the House of Elders in the British system, okay? So that was there. And yesterday I told you that Rajya Sabha can have the maximum 250 members. Out of those 250 members, right, you can say 12 members shall be nominated by the President of India, right? These will be among those persons who will be having the experience and special knowledge in the field of art, literature, science, and social service. And the President nominates those persons on the recommendation of the government, right? That was there. And the rest of the members means 238 members shall be elected by the elected members of the legislative assemblies of the states, right? So that means there is a indirect election, system of proportional representation, single transferable vote that's prevailing there. Okay. So but at present the strength of the Rajya Sabha is 245, out of which 229 members represent the states and 4 members represent the two union territories of Delhi and Puducherry, of which Delhi has 3 seats in Rajya Sabha and Puducherry has 1 seat, right? And 12 nominated members are there. So that is there. So among the we can say among the members of Rajya Sabha, right? Though a member is nominated or a member is, you can say, elected, it makes no difference, right? Even a nominated member can become a minister, right? A nominated member has all the, you can say, privileges and powers, right, as are available to the other members of the Rajya Sabha. The only difference is that the nominated members of Rajya Sabha cannot participate in the election of the President of India. Okay. And one more thing which can be asked indirectly to you, right? That is important to note that nominated members in the legislative assemblies of the states cannot vote, right, for the election of the Rajya Sabha members and for the election of the president also, right? So this is important to note here. Okay, so that was there. And next, what we discussed yesterday was that Rajya Sabha is a permanent house, right?
The first Rajya Sabha was constituted in 1952 after the first general elections were held in India in that year. Okay, and one third members of Rajya Sabha are retired every 2 years, right? So this way, the term of a member of Rajya Sabha amounts to 6 years in total. Okay, that was there. And I told you also that the retired members of Rajya Sabha are eligible for re-election for any number of times. Okay, so that was the point, right? And the next thing I told you about the qualification of a Rajya Sabha member, I told you that one condition was that he should be a citizen of India. Second condition was that he must be having right a minimum 30 years of age. That was the second condition, right? And the next was that, right? So he has to, you can say, bear an oath or affirmation before a person authorized by the election commission for that purpose, right? And the fourth qualification was that, right, any other qualification prescribed by the law made by the parliament, right? So accordingly, our parliament has enacted, you can say, Representation of People Act 1951, and Representation of People Act 1951 talks about the further qualifications for a person to be elected to the Rajya Sabha, right? So that was there. Okay. So then we were discussing about the Lok Sabha also. As far as the Lok Sabha was concerned, we discussed that Lok Sabha is known as the lower house, House of People. It is equivalent to the House of Commons in the British Parliament, right? So it's a name in the constitution. In the original constitution was the House of People. It also got the Hindi name Lok Sabha in 1954, right? So this basically, you can say, this provision of Lok Sabha in our system, right? That is in consistency with the spirit of the Constitution, which speaks that the ultimate sovereignty lies in the people of India. So that is why this is in accordance with that. Okay. So it means the people of India, right, elect their representatives and they send to the, you can say, Lok Sabha, right? And from those members of Lok Sabha, the majority party forms the government, right? And this way, you can say, the country is being governed. Okay. And Parliament of India is the highest decision-making body of our country also, right? And the first Lok Sabha was also constituted in the year 1952. Lok Sabha, Lok Sabha's maximum seat strength can be 552, but the present seat strength is 545. Out of which, right, two members of Anglo-Indian community, which can be nominated by the President of India if he thinks that the community has not been adequately represented. But this provision has now been withdrawn from the Constitution for the time being by 104th Amendment to the Constitution in 2020. Okay. So it means now the members of Lok Sabha are 543, right? You know, after the you can say formation of the 17th Lok Sabha, right, which was elected in 2019, the Anglo-Indian members were not nominated in the 17th Lok Sabha, right? This is important to note. So that is why out of the 545, I was telling you, two members from Anglo-Indian community and 530 members representing the states, from the states, and 13 members from the
Union Territories of India, right? So that is clear. Okay. So it is important to note here that in the Rajya Sabha, the representation is given to only two union territories of Delhi and Pondicherry, which do have the legislative assemblies. But in the Lok Sabha, right, all the union territories, right, send their elected representatives. Okay, so that is important to note. So I told you that the term of a member of Lok Sabha, if you can say, is in accordance with the term of the Lok Sabha, right? If a member is not, you can say, if a member does not vacate his seat earlier, right? The seat of a member of Lok Sabha becomes vacant due to numerous reasons, right? So one reason is if a member gives resignation, puts up his resignation, right? The second reason is that if a member dies, right? The third reason is that if a member got elected to two houses at the same time, right? And he fails to express his, you can say, sorry, if a member is got elected to two Lok Sabha seats at the same time, and he fails to express his, you can say, discretion within the specified time, right? So then both of his seats shall become vacant. Is it okay? So that was there, right? And similarly, if the elections of a member are declared void by the court, right? And the next thing is that if a member, right, is you can say is you can say dismissed from the membership, right? So as far as the dismissal of the membership is concerned, there are certain points. One is the constitution, which has given certain provisions, right? We talked about those yesterday also, right? So one is that, and the second is disqualification on ground of defection, which is decided by the presiding officer of the House. And the third point is that the Speaker has the power to, the Speaker has the power to, you can say, suspend a member, right? If his behavior is not, you can say, uh, or we can say, if his behavior, right, obstructs the smooth, you can say, running of the business of the Lok Sabha, right, or due to some other reasons, right? So that we discussed, and that's be sure that Speaker has the power to suspend a member only, right? But the dismissal of a member is decided by the House, right? Speaker cannot decide about the dismissal of a member on this ground. Okay, so this is the point which I think you must be remembering, right? And as far as the term of Lok Sabha was concerned, we discussed that the normal life of the Lok Sabha is 5 years, right? But it can be extended during the national emergency under Article 352, right? Uh, for 1 year at a time, right? And up to, you can say, any length of period, right? That is clear, right? But once the emergency is lifted, then it has to be made sure that the elections are held within the 6 months, because after the lifting of the emergency, the life of the Lok Sabha cannot be extended beyond 6 months. Okay, so that was the point there. And apart from that, the president has the power to, you can say, dissolve the Lok Sabha earlier also. Earlier means before the completion of the 5 years also, on the recommendation of Prime Minister, or you can say otherwise also. So these were the certain provisions about the life of the Lok Sabha, right? About the term of the Lok Sabha. And apart from that, yesterday we start our discussion about the presiding officer of the Lok Sabha, right? So let me start
from that point, because yesterday we could discuss only few points, right? So that's why, due to the electricity, due to the problem of the network, right? So let me take it now, right? So yesterday we were discussing that the presiding officer, right? Presiding officers of the houses of parliament, right? So beta, I told you earlier also, right? Don't use the term parliament only, because parliament consists of the president as well, right? If you want to refer to the two houses, then it's better that you mention houses of parliament, right? So that is there, right? So we know that there are two houses of parliament. One house of parliament is Rajya Sabha, and the second is Lok Sabha, right? Lok Sabha and Rajya Sabha, they are the two houses of parliament, right? So as far as the presiding officers of the two houses are concerned, the presiding officer of the Lok Sabha is called Speaker, right? Presiding officer of the Lok Sabha is called Speaker, and the presiding officer of the Rajya Sabha is called Chairman, right? Presiding of the Rajya Sabha is called Presiding officer of the Rajya Sabha is called Chairman, right? So we were talking about the speaker yesterday, right? So as far as the speaker is concerned, first thing we were discussed yesterday that about the election of the speaker, right? Yesterday we were discussing about this, about the election of the speaker, right? So as far as the election of the speaker is concerned, right, we were discussing that as that according to our constitution, right, the speaker or the members of Lok Sabha, right, members of Lok Sabha, right, elects speaker, elect speaker, right, elect speaker from amongst themselves, right, from amongst themselves in the very first sitting of the house, right, right, very first sitting of the house, right, after the, okay, after the new Lok Sabha is formed, right, after the new Lok Sabha is formed. So I have added one line with that, right, which we were discussing yesterday. Okay. So beta, here what we mean that we were discussing yesterday that members of Lok Sabha elect a speaker, right? So it means I told you yesterday also that speaker is an elected figure. First thing, speaker is an elected figure. Okay, one thing is that. Second point was that, right? So a speaker is elected by a majority vote, right? Speaker is elected by a majority vote, right? And the third point is that, right, speaker is elected by a majority vote. And the third point is that we can say, right, so speaker enjoys the majority of the Lok Sabha, right? Speaker enjoys the majority of the Lok Sabha, right? Right. So the next point or next thing is that we can say, right, speaker enjoys the majority of the Lok Sabha. Next is uh, only, only, only members of Lok Sabha, members of Lok Sabha, okay, can take part or can participate
right, in the election of the speaker, right, in the election of the speaker. So these are some important points, right, about the election of the speaker, which I think you should remember, right? These are certain important points. Okay. So this is the one point, right? And the second thing, I hope these points are clear to everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, beta. Okay. If anybody wants to ask, you can please, right? So not an issue. And the next point is that, right, what we were discussing that from amongst themselves, right? So this is also an important point, from amongst themselves, right? Okay, it means what is there that the we can say speaker of Lok Sabha, right, must be a member of Lok Sabha, right, at the time he is elected the speaker, right? He is elected the speaker. So this point is important. Bear in mind, right? So this is the one point, right? And the next point is that, right, unlike a minister or prime minister, right, Lok Sabha speaker cannot be an outsider, right? Lok Sabha speaker cannot be an outsider. Yesterday I told you that an outsider means who is neither a member of Lok Sabha or Rajya Sabha, not Rajya Sabha, can be, you can say, appointed a minister or prime minister, right? Uh, that was there for a maximum period of 6 months, right? Provided that he should secure the membership of either house within 6 months. Okay, so that's there. But here it is not that, right? Not even for 1 day, ऐसा नहीं होगा, right? So that is the point, right? So it further means, it implies that that the moment, right, the Lok Sabha seat of speaker, the Lok Sabha seat of speaker becomes vacant, right? Becomes vacant, right? The office of speaker shall also become vacant. The office of speaker shall also become vacant, right? Shall also become vacant. So that is the point. Is it clear, beta? So this is what we mean by the from amongst themselves. Sir, Lok Sabha seat of speaker. Okay. मैंने क्या लिखा है? The Lok Sabha, अच्छा हाँ, Lok Sabha seat of speaker. Okay. So this is the point, right? So these are all important points. I hope you will bear these points in mind, right? And the next thing, right, which is important here for discussion, that is that it is mentioned here, you can say that in the very first sitting, right, of the house after the Lok Sabha is formed, right? So I am taking the case here, new Lok Sabha, right, of new Lok Sabha. So यहाँ क्या लिखा है? In the very first sitting of the house, right? It means, right? So when the members of the new Lok Sabha, right, new Lok Sabha, right, you can say, conducts the very first meeting, right, conducts the very first meeting after the formation of the Lok Sabha,
right after the formation of the Lok Sabha, right, the very first, right, the very first action of those, right, after you can say bearing or after taking oath, right, after taking oath, the very first action of those after taking oath will be the election of the speaker, right, will be the election of the speaker, right. So नई लोकसभा की फॉर्मेशन के बाद मेंबर्स का सबसे पहला काम होता है ओथ लेने के बाद इमीडिएटली स्पीकर को इलेक्ट करना, राइट. सो यू कैन से so once an individual is elected speaker, right, he is escorted to his seat, right, by the prime minister and the leader of opposition, right, by the prime minister and the leader of opposition in the Lok Sabha, right. So that is the first thing, right, in the Lok Sabha. Okay. So when a member, let's suppose Om Birla ji, when he was you can say elected speaker, right. So according to the provisions of the constitution, right, so he was sorry, according to the convention, it is not a provision of the constitution, right. So he was escorted to the speaker's chair by the Prime Minister Modi and by the leader of opposition, if there is any. Sometimes leader of opposition nahi hota, in that case the president will escort him to the chair. Okay, so that is this, right. So now what is important next here, right, now what is important here next, that is you can say our constitution speaks that, right, speaker is an elected figure, right, elected figure, that members of Lok Sabha shall elect speaker from among us themselves, right. But sometimes there are conventions also, right. There are some conventions also, right. So in Indian system, right, the convention, right, there is a convention, right, there is a convention that, right, that you can say the speaker is right elected unanimously, right, by the consent of all parties, right, by the consent of all parties, right, by the consent of all parties, right, without, right, without indulging into the election process, right, without indulging into the election process. So this is a convention. ये हमारे सिस्टम में एक रवायत बन चुकी है, right. रवायत means कि usually because it is very much clear to all parties that the party which is having the majority, which has formed the government, that party shall have their speaker, obviously, right. So that is why you can say, keeping that in mind, right. So all the parties, right, have a, you can say agreed on that, right, that it is better if the speaker be elected unanimously, right, without indulging into the election process, because this is important, right, due to the certain reasons, right. So this is desirable, right,
due to the certain reasons, right? This is desirable and has merit, right? Due to the certain reasons, right? कुछ कारण होते हैं जिस वजह से ये डिजायरेबल होता है और इसमें मेरिट होती है. Number one, right? Because after being elected, right, or after he takes a chair, right? After he takes chair, right? Speaker, right, is the speaker is the guardian of the house, right? Where he has to, right, upheld the democracy, right, by treating at par, right, by treating at par the all political parties and members, right? So that is why, it is desirable that it would be better if the speaker should be, right, if it is avoided that you can say speaker is not indulged into the politics, right? So that is the one reason that why this practice is there, right? And now the second reason that why this practice is there, right? The second reason is that it is expected, right? It is expected, right? That it is expected from the speaker, right? From the speaker to behave independently and impartially, right? Right? But if the election will be held, in the house, right? In the house to elect the speaker, right? Then obviously, right? You can say speakers, right? Speakers, okay. Speakers, we can say, right? Tilt will remain. Speakers tilt will remain towards those, right, who had supported him right, during his election to the office of speaker, okay, to the office of a speaker. So ये इस चीज में problem create करेगा. So that is why, right, we have developed this convention that, right, a candidate is proposed by the, you can say, majority party, and then they, right, conduct, or they, you can say, hold discussions with the other parties, right, leaders of other parties, and then a consensus is developed, and then on that basis the speaker is elected, right? So this is a convention in our country only. Otherwise, this does not have any legal backing, right? अगर कल को कोई पार्टी आके कहती है कि नहीं हमने तो इलेक्ट ही करवाना है, right? हमें कंसेंसस की जरूरत नहीं है, right? Yeah. So then in that case you can say it, right? So constitutionally, you can say this has no validity, right? So this is the point. The speaker is an elected person, right? So now we can say now the next important point which is here, right? Now the next point which is here, we can say that every time, right? Usually we can say, right, speaker belongs to the ruling party or the ruling group, right? Like you can say NDA,
the speaker can belong to NDA, right? So that's why, right? So the you can say things happen like that, right? And now there are some important points about the speaker, right? So because speaker is expected to work above the party politics, right? So usually it is expected that usually it is, you can say, desired that speaker should snap his ties with his political party after he is, you can say, elected as a speaker or after he sits in the chair of the speaker, right? So, but you can say there is no such constitutional or legal requirement in our country. So that is why usually after, you can say, taking the charge of the office of speaker, right? Usually individuals do not, you can say, resign from their parties in our system in our country, right? There is only, right, okay, the only person, right, who resigned from his political party, Somnath Chatterjee. no, who resigned from his political party, right, from his political party after he was elected to the, right, after he was elected speaker, right, was Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, right, Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, right. So he, you can say, right, he left his political party. Okay, so this is important to remember. Beta, let me correct you. Somnath Chatterjee, you can say, tried to behave independently always, right? But he did not, you can say, resigned from his party, right? So no doubt he was a man of very high integrity, Somnath Chatterjee, right? End पे जब कुछ issue हुए थे, then at the end, towards the end, he left his party, right? So that is why the only person in the India's parliamentary history who left his office after he was elected, who left his political party after he was elected as speaker, right? He was Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, right? Okay, sir. Okay, yes, in fourth Lok Sabha, right? He was the speaker in the fourth Lok Sabha. And plus, one more important point is that, right, Dr. Neelam Sanjeeva Reddy is the only, right, is the only speaker of Lok Sabha, is the only speaker of Lok Sabha, right, of Lok Sabha, who was, right, elected president unopposed, right, who was elected president unopposed, right. So एक ही लोकसभा का स्पीकर जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बना है इंडिया की हिस्ट्री में, वो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी रहे. Okay, is it clear? So now the next point is that these are very important facts, beta. Note these down, right? So such facts are sometimes asked in the examination. Okay, and these facts will not be available in your book. Okay, so the next thing or next point is that you can say, right? Do you know that who was the first, you can say, woman speaker? Who was the first woman speaker of Lok Sabha? Do you know? Who was the first woman speaker of Lok Sabha? Yes, please tell me. Huh? Yes. Sir, Meera Kumar. Yes, she was Meera Kumar, right? Meera Kumar, right? In 15th Lok Sabha, right? In 15th Lok Sabha from 2009 to 2014. Right? The present Lok Sabha is 17th Lok Sabha. Sometimes this question is also asked because हमें याद नहीं होता ये. Right? The first woman speaker of Lok Sabha. And the next point is that which is important here to be discussed. Right?
So that is the first, right? The first we can say Dalit Speaker of Lok Sabha. The first Dalit Speaker of Lok Sabha. लोकसभा के पहले दलित स्पीकर कौन कौन बने? है किसी को याद? मीरा कुमार। नो बेटा, ही वाज जीएमसी बालायोगी, राइट? जीएमसी बालायोगी, जिनकी बाद में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, राइट? जीएमसी बालायोगी became the first Dalit speaker, right, in 12th Lok Sabha, right, in 12th Lok Sabha, right? You can say his period of serving as speaker was 1999 till 2002, right? So he served as speaker during this time, right? And the next point is that, right, the next is that you can say the first, right, scheduled tribe speaker of Lok Sabha. Tell me, the first scheduled tribe speaker of Lok Sabha, who was that? P.A. Sangma. Right, so P.A. Sangma was that, right? He served in the 11th Lok Sabha, right? 11th Lok Sabha. His period as speaker was 1996, okay? 1996 to 98. So that was his period as speaker, right? So that is there, right? And then the next thing is that, one more question can be asked at that. Who was the first speaker of Lok Sabha? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, राइट? Who was the first speaker of Lok Sabha? These are the facts. ये भी हमें ध्यान में होने चाहिए हमारे। सर ये तो आपने बताया हुआ है सर, गणेश वासुदेव मावलंकर। Yes, G.V. Mavalankar, right? G.V. Mavalankar was the first speaker, right? He served from 1952, right, in first Lok Sabha, obviously, right, in first Lok Sabha from 1952, right, till 1956 he served, right? So this is, and the next question, the next fact which I am sharing with you, that is the first, you can say, Sikh speaker, क्योंकि ये स्टेट के पीसीएस में पूछा जा सकता है, the first Sikh speaker of Lok Sabha, who was that? The first Sikh speaker of Lok Sabha. Gyani Jail Singh, sir. No, beta. He was Sardar Hukam Singh, right? Hukam Singh from Patiala. परमजीत के शहर के थे, right? In you can say third Lok Sabha. In third Lok Sabha from 1962, right? 1962 to 1967, right? So during that time, right? Hukam Singh from Patiala. Okay, 1962 to 1967. So the next thing was, right, the longest serving speaker of Lok Sabha. The longest serving speaker of Lok Sabha. वो कौन आदमी है जिसने सबसे ज्यादा समय जो स्पीकर रहा? The longest serving speaker of Lok Sabha. Okay, so ये कुछ फैक्ट्स हैं बेटा जो आपको याद रखने होते हैं. Okay, मेन फैक्ट्स हैं ये. The longest serving speaker of Lok Sabha. Who was he? Right, that person was, right, M.A. right, Aingar, A-N-G-A-R, right, Aingar, South Indian, Tamil Nadu. He was from there, right, and he
you can say served as Speaker in first and second Lok Sabha, right? First and second Lok Sabha, right? From 1956, we can say, up to 1962, right? So इनका पीरियड 6 साल से ऊपर चला जाता है, right? So that is there. Okay. So the next is the, you can say, right, shortest serving speaker. He is Dr. Neelam Sanjeeva Reddy, because Dr. Neelam Sanjeeva Reddy serves as speaker twice, right? Once he served as speaker from the period, you can say 1967 to 1969, for 2 years only. And the second time he served as speaker in 1977, right? Just for 109 days only. So that is the shortest term of any individual as a speaker, right? So Dr. Neelam Sanjeeva Reddy. Okay, so you should bear that in mind. Okay, so these are some important facts which I think you must bear in your mind. Okay, so that is there. Right? So now that we will move on to discuss about the right powers and role of speaker. Right, so we are going to discuss that now. Powers and functions, we can say. Right, so speaker has powers and functions. Right, so we will discuss it in a, you can say, very detailed manner. Right, so थोड़ा सा क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं हमने पढ़े होते हैं, हमें ऐसा होता है कि वी नो दीज टॉपिक्स, राइट? बट इन टॉपिक्स के अंदर बहुत कुछ होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई कितना भी मैं पढ़ लूँ, राइट, मुझे अभी भी लगता है कि मैं शायद और पढ़ूँ इसको. सो दैट इज व्हाई ये मत समझना, है ना, कि ये तो चलो पढ़ा ही हुआ है, हमने लक्ष्मीकांत इतने बार पढ़ ली, या हमने कोई और बुक पढ़ ली, या हमने, राइट? सो इसमें इसके अंदर बहुत चीजें नई निकलेगी, राइट? सो द one thing is there, beta. I am just before entering into the powers and functions, right? Do you know who is the you can say speaker of the 17th Lok Sabha? 17th Lok Sabha is the current Lok Sabha which is running at present. Birla. Yes, yes. So Om beta Birla, Shri, yes. Shri Om Birla from Kota, Rajasthan, right? So he is the speaker of the current Lok Sabha, which is the 17th Lok Sabha. We can say, right? We can say, okay. So that is there, right? Beta, one more thing is that we were discussing that, right? Though speaker is right, though speaker, right, is elected according to the constitution. That is a separate thing that we try to make a consensus on the speaker's name, right? Though speaker is elected, so right, so it is obvious that the speaker will always be, right? The speaker will always belong to, right? The speaker will always belong to the ruling party, right? The speaker will always belong to the ruling party. True है ना ये बात? The speaker will always Yes, belong sir. to the ruling party, right? सर 2011 के बाद ये कर दिया कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन से होगा. Yes, beta. Yes, beta. I'm just coming to the point. Ruling party, right? But there are instances. There are two instances, right, in India's parliamentary history, right? In India's parliamentary history, when the speaker was from a party, right, from a party different than the ruling party, right, different than the ruling party. Okay, so हमारे ऐसी two instances हैं देखने को मिल रही.
कि जब स्पीकर रूलिंग पार्टी के नहीं थे, he was not from the ruling party, right? So first such case appeared in the, you can say, case of the in 12th Lok Sabha, right? That is GMC Bala Yogi का जो केस था, right? GMC Bala Yogi, right? So he was not from the ruling party. In fact, he was from the TDP, Telugu Desam Party of Andhra Pradesh, right? So he was belonging to that party, right? And the second thing was that in the, we can say, next, in the 13th Lok Sabha, right, Manohar Joshi, right, was the speaker, and he was from Shiv Sena, right? He was from Shiv Sena, right? So it means there are two such instances in 12th Lok Sabha and 13th Lok Sabha, where the speaker was from another party than the ruling party, right? Okay, so that is there. Okay, beta. So this is there, right? So now we are coming to the point that speaker's powers and functions, right? So first thing is, the first very important question is that, right, from where, right, from where the speaker, right, draws his powers. This is the very important question. From where the speaker draws his power. Speaker को power कौन देता है? Speaker कहाँ से अपनी power लेता है? Okay, so the speaker draws his power from the provisions of the constitution. This is the first thing, right? The provisions of the constitution, right? Provisions of the constitution. So one is that. Okay, the next thing is that that is, we can say, the rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha, right? The rules of procedure and conduct of business, right? Conduct of business of Lok Sabha. मैंने LS लिख दिया है, of Lok Sabha, right? And third is, we can say, the conventions, right? Conventions and the precedents, right? Precedents means जो पहले कुछ हो चुका है, डिसीजन दिए जा चुके हैं, उनको देख करके, right, वो करते हैं. Okay, so this is the first point, right? So is it clear, beta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so now the next point is, beta, who assists the speaker, right? Who assists the speaker, right, in performing his duties, right? In performing his duties, right, and exercising his powers, right? And exercising his powers or functions, right? Exercising his powers, right? स्पीकर को किसकी असिस्टेंस मिलती है ये सब करने में, राइट? स्पीकर को कौन असिस्ट करता है इसमें है बेटा? वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वन इज द राइट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोक सभा, राइट? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोक सभा, one is that person, right? And second is the, we can say, senior, we can say, right, senior officials of the Secretariat of Parliament, right, of the Secretariat of Parliament, right? Parliament के Secretariat के जो senior officials हैं वो इसको assist करते हैं, right, in performing his duties or in exercising his powers, right? And the next is, we can say, right, you can say the next is the right, entire, we can say, the security staff, right? Entire security staff of the house, right? So that is clear, right? So this is the point, right? Okay, and सर ये वाला जो होता है सर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, सर ये IAS ऑफिसर होता है?
हाँ बेटा, ये बेटा यूजली तो देखो इसके लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन तो नहीं डिटरमिन की थी गई, राइट? लेकिन यूजली दे आर वेरी मेच्योर एंड वेरी लर्नड पर्सन्स, राइट? एंड हु आर मतलब हु डू हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज द you can say legal exposure also, right? Exposure of law also. ओके सर। जो वो हमारे ऑथर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, सुभाष कश्यप। यस सर, डॉक्टर सुभाष कश्यप। Yes. So beta, he was also the Secretary General of Lok Sabha, right? And now recently, and now recently some IAS officer has been appointed the Secretary General of Lok Sabha. Recently, I think in few days ago, right? So that is there. Okay. So the next important thing is beta that one more fact. Then we will turn on to the speaker's role, right? Speaker's powers, right? Thing is that beta because speaker is the we can say head of Lok Sabha. Because speaker is the head of Lok Sabha and is the principal spokesman of Lok Sabha, right? And is the principal spokesman of Lok Sabha, and is the principal spokesman of Lok Sabha. Therefore, right, he represents the collective voice, right? He represents the collective voice of the House, right? So he represents the collective voice of the House, right? So this is the important thing, right? He represents the collective voice of the House. Okay, so beta, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि who is the principal or chief spokesman of Lok Sabha, right? So आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, right? नीचे लिख सकते हैं बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है who is the chief spokesman, right, of Lok Sabha, right? आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, right? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लिख देते हैं, one is the prime minister, that is the first option, right? Prime minister, right? And second option यहाँ लिख देते हैं बेटा, that is minister of right parliamentary affairs, right? Minister of parliamentary affairs, right? थर्ड ऑप्शन बेटा लेट्स सपोज लिख देते हैं सी ऑप्शन, दैट इज बेटा स्पीकर लोकसभा, राइट? एंड फोर्थ ऑप्शन लिख देते हैं बेटा दैट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, राइट? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? चलो अब तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, लेकिन इससे पहले किन किन को पता था बताओ? नो सर, नहीं क्लियर से दे बारे पता नहीं सर था, पता नहीं था, लेकिन सर स्पोक्समैन लिखा हुआ है ना सर, उस शब्द को पढ़ के सर स्पीकर लगाते हैं। ठीक है, हाँ वो चलो गैस हो जाता है ना, गैस इज डिफरेंट थिंग, राइट? सो बेटा ये चीजें होती हैं, राइट, विच यू शुड बी इन माइंड, राइट? छोटी छोटी चीजों को नोट करना होता है ड्यूरिंग द लेक्चर, राइट? लेक्चर का यही बेनिफिट होता है, अदरवाइज तो बाकी तो सब चीजें बेटा बुक्स में होती हैं, राइट? ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਬੁక్స్ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾंत वहां किते नहीं है, मतलब सर आपकी वाली सारी चीजें नहीं होती बुक्स में। नहीं बिल्कुल सर, पता नहीं क्या लगता है मेरे पास तो सर इतनी सारी बुक्स हैं सर, वो आपने रूल्स जो पढ़ाए थे सर, वो रूल 373 और ये सब सर, वो तो किसी भी बुक में नहीं है सर, वो तो कहीं भी किसी में भी नहीं है सर। ठीक है, तो वही है बेटा एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं है ना। ਕੱਲ ਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ सिर्फ सीधा ही ऑर्डर देता हूँ। यस बेटा यस, कहीं ऐसा ना हो कि निशांक आप मुझे रिजेक्ट कर दो कि जो सर पढ़ाते हैं वो तो किताबों में नहीं होता।
है ना? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, वो तो सर ज्यादा फायदा है ना सर, सर बाकी सब तो बुक्स में से मिल ही जाता है। Yes. So now that we are coming on the powers and the functions, right? So first thing is that, right? So powers of powers, duties, role, anything कह सकते हैं, right? Powers of speaker, right? Powers of speaker with respect to, right? With respect to the members of Lok Sabha. First मैं यही लेता हूँ, right? With respect to the members of Lok Sabha, right? इसको बेटा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बन सकते होते, राइट? सो किसी चीज को आपको लगेगा कि ये तो मेंबर्स में डालना चाहिए था, मैंने कहीं और डाल दिया, राइट? सो डोंट माइंड दैट, ओके? सो द फर्स्ट पॉइंट here which is important, that is you can say speaker is, the first point is that speaker is the right guardian of speaker is the guardian of the rights and privileges of members of Lok Sabha, right? Rights and privileges of members of Lok Sabha, right? लोक सभा के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स, अधिकार, प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार हैं जो, राइट? सो उनका जो स्पीकर होता है वो गार्डियन होता है, राइट? स्पीकर मस्ट हैव टू टेक केयर दैट the rights and privileges of the members are not breached, right? In case there is a breach of privilege of the members, right, then the action is taken by the speaker, and whatever action the speaker will take, that will be final, right? So he can even order the jail term also for 2 days, for a week, for 10 days, or like that, right? ऐसा हुआ है, यूपी में हुआ है, right? And he can you can say you can say, right, put a fine also on that person, right? And he can suspend a person from the house, right, for the breach of privileges of the members. So it means speaker has the powers related with that, right? So second is that you can say speaker has, right? Speaker has, you can say, wide ranging, right? स्पीकर हैज वाइड रेंजिंग डिसिप्लिनरी, ये पॉइंट बेटा नोट कर लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? वाइड रेंजिंग डिसिप्लिनरी पावर्स, राइट? डिसिप्लिनरी पावर्स which he can which we can say he can use, right? He can use against members, which he can use against members, creating indiscipline, right? Creating indiscipline, okay? As in the house, right? In the house, as it is the duty of the speaker, right? As it is the duty of the speaker, right? Duty of the speaker, right? To ड्यूटी कह सकते हो आप, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, राइट? टू मेक श्योर, राइट? टू मेक श्योर, राइट? टू मेक श्योर, यू कैन से, राइट, that you can say proceedings of the house, right, go uninterrupted, right? Uninterrupted, one is that, right? And he is the person, right, who has to make sure that the house is in order. Make sure that the house is in order, right? That the house is in order. So this is the important point here, right? Because speaker की ये important responsibility है
कि speaker has to see that right. One thing is there should be no indiscipline in the house. Means there should be because indiscipline creates disorder in the house. Yes, Nishank, I am coming to you. It creates disorder in the house. And second thing is that it you can say right. You can say hinders the uninterrupted running of the business of the house, right? So that can be there. Yes, Beta Nishank, what do you want to ask? सर ये वाला जो सर आपने फर्स्ट वाला ये जो लिखवाया सर स्पीकर इज द गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा सर ये जो प्रिविलेजेस होते हैं सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं या सर ये कन्वेंशंस हैं नहीं ये बेटा रूल्स में लिखे हुए हैं कुछ हैं प्रिविलेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं एंड हाँ कुछ हैं जो वो रूल्स में हैं वी विल डिस्कस दोस राइट व्हेन विल कम एट दैट पॉइंट राइट सो बेटा अब क्या है इस पॉइंट में देखो कि स्पीकर की ये एक जिम्मेवारी है स्पीकर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूटी है वी कैन से राइट क्या कि टू मेक श्योर दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस गो अनइंटरप्टेड राइट कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो निरंतर चलती रहे उसमें कोई रुकावट ना आए दूसरी है स्पीकर की ये ड्यूटी है टू मेक इट श्योर दैट द हाउस इज इन द ऑर्डर ठीक है हाउस में डिसिप्लिन है हाउस ऑर्डर में है चल रहा है राइट सब कुछ ठीक ठाक है सो बेटा जब स्पीकर के ऊपर हमने ये दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो देन स्पीकर को हमें कुछ डिसिप्लिनरी पावर्स भी देनी होगी राइट जैसे एक टीचर है टीचर ने क्लास के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है तो उसको लेकर के फिर टीचर के पास कुछ पावर्स होती हैं राइट टीचर कैन एक्सपेल ए स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम ऐसा भी होता है राइट टीचर कैन पनिश ए स्टूडेंट राइट टीचर कैन इम्पोज ए फाइन ऑन द स्टूडेंट राइट सो ऐसी पावर्स होती हैं सो बेटा जहां पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने किसी चीज को राइट स्मूथली रन करना है आपने इंश्योर करना है कि उसके अंदर रुकावट ना आए आपने इंश्योर करना है कि डिसऑर्डर ना क्रिएट हो वहां आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पावर भी साथ में होनी चाहिए अदरवाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यू वुड नॉट बी able to right fulfill your responsibility so that is why the speaker has been given the disciplinary powers also so that he may perform his responsibility right which has been imposed on him because this is a very big responsibility right you must be seeing that in Lok Sabha right there are the persons who are having different ideologies, right? Who are having personal grudges against one another, who belong to different parties, right? Which are competitors of, you can say, one another, right? In the power, in the, you can say, political field, right? So, beta, that is why it is very difficult in such a case to maintain the order in the house, right? So that is why disciplinary powers were must, and that is why the speaker enjoys these disciplinary powers in our system. Okay, so this was the second point. And now there is the third point, beta. The third point is that, right, beta, he ensures, means the speaker ensures, right? Speaker ensures that, right? Speaker ensures that, right, adequate opportunity is given to all members, right? Adequate opportunity is given to all members and, sorry, all sections in the house, all members, all sections in the house, right? Because speaker ne to party wise time dena hota hai na? So adequate opportunity be given to all sections in the house. ये स्पीकर को इंश्योर करना होता है राइट सो बेटा यू कैन से देयरफॉर
the speaker needs to act, because these are the very important responsibilities of the speaker, right? One is he has to guard the rights and privileges of the members, right? मैंने आपके मान लीजिए यू आर पार्ट ऑफ माई यू कैन से फैमिली, है ना, मैंने आपके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को मैंने गार्ड करना है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरी, राइट? दूसरी है मैंने काम काज को स्मूथली चलाना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने सभी को अपॉर्चुनिटीज देनी है, राइट, बैलेंस्ड वे में, सो मेरी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। सो बेटा दैट इज व्हाई, राइट, so the speaker, we can say, requires, right, so the speaker requires to act, right, to act in a, right, so the speaker requires to act in a very, right, act in a very balanced way, right? किसी को ये शिकायत ना हो कि speaker is doing step motherly behavior with us, right? तो फिर थोड़ा खराब हो जाता है, right? So that is why the speaker requires to act in a very balanced way, right? For which he requires, right? For which he requires the qualities, right? The qualities like, right? इसके लिए स्पीकर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, right? Like what? One is the diplomacy. स्पीकर के अंदर के पास डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सभी को खुश रखना, किसी को नाराज नहीं करना, अपना काम भी निकलवाना है, राइट? सो ये होता है, राइट? कैरेट स्टिक अप्रोच जहाँ यूज करनी हो वो भी करनी होती है, राइट? सो हर चीज है ना, तो स्पीकर का अल्टीमेट जो गोल है वो तो हाउस को स्मूथली रन करना है, सो दैट इज व्हाई ही शुड बी डिप्लोमेट। सेकंड थिंग इज फॉर्मनेस, राइट? फॉर्म होना चाहिए स्पीकर, राइट? एंड थर्ड थिंग इज बेटा दैट इज द परसुएशन। स्पीकर को अपनी बात को परसू करना पड़ता है, राइट? परसुएशन चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द वी कैन से, राइट, दैट इज द परसेवरेंस, राइट? सो परसेवरेंस भी होनी चाहिए। So these are the important qualities which the speaker must be having. And apart from that, right, the speaker must be having the patience also. A lot of patience is required for a person who is, you can say, in the chair of speaker. है ना? आपने सुना होगा, है ना, कितनी पेशेंस से काम करते हैं वो लोग, आपने देखी होगी कभी लोकसभा की कार्यवाही चलती हुई, राइट? सो दैट इज देयर, ओके? सो the next thing, because बेटा ये तो हमने बात की कि these are the responsibilities of the speaker, right? So these are certain, you can say, right, you can say duties of the speaker which is expected that he would perform all these, right, with an utmost integrity. So उसके लिए फिर स्पीकर के पास, स्पीकर को कैसा होना चाहिए, अब हमने ये बात कर ली है ना, कि स्पीकर ऐसा होना चाहिए, राइट, जिस पर्सन के अंदर डिप्लोमेसी हो, फॉर्मनेस हो, परसुएशन हो, परसेवरेंस हो, राइट, पेशेंस भी हो, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट बेटा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट? अब मैं यहाँ वो बात करता हूँ, राइट? सो वी कैन सी टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, to fulfill his responsibility, अपनी responsibility को पूरा करने के लिए, right, he has to keep open, right, he has to keep open, we can say, right, a variety of, right, he has to keep open a variety of informal channels of communication, right, informal channels of communication, right? डिप्लोमेसी यही कहती है, राइट, इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? कभी उसको सोनिया गांधी के साथ भी अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, मोदी जी के साथ भी रखना पड़ेगा, राइट, राहुल गांधी जी के साथ भी रखना पड़ेगा, राइट? अगर हम
आपकी सपा की बात करें, शिवसेना की बात करें, कॉमरेड्स की बात करें, उनको सभी के साथ उसको जो अपने इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनको ओपन रखना होता है, राइट। किसके साथ? विद इंडिविजुअल मेंबर्स, राइट। एक एक मेंबर के साथ उसको अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना पड़ता है, राइट। लीडिंग राइट मेंबर्स, लीडर्स ऑफ पार्टीज, राइट। पार्टीज के लीडर्स के साथ उसको अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है, राइट। एंड ग्रुप्स, राइट, एंड ग्रुप्स इन लोकसभा, बिकॉज जो भी उसको ठीक लगे, है ना, कि ये पर्सन ठीक है, इस पर्सन के साथ मुझे बात करनी चाहिए, है ना, लोकसभा के बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, सो ही इज फ्री, राइट। सो दैट इज देयर, it is required for him, okay, so that is there, right। so apart from that, इसी में आगे मैं कर रहा हूँ बात। एक तो हमने बात की कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट। दूसरा कि उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो वो ओपन रखने पड़ते हैं, राइट। तीसरी चीज बेटा क्या वो करता है? ही इंटरेक्ट्स, राइट, ही इंटरेक्ट्स विद लीडर्स ऑफ, right, leaders of, we can say, all parliamentary parties, leaders of all parliamentary parties, right, leaders of all parliamentary parties at lunch on meeting, right, at lunch on meetings we can say, right, on the every session, right। जब भी सेशन होता है तो वो डिफरेंट पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स के साथ वो लंच ऑन मीटिंग्स करते हैं, राइट। उनके व्यूज जानते हैं, वो क्या करने वाले हैं हाउस में, उसके अकॉर्डिंग फिर स्पीकर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है कि मेरे हाउस में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। सो ही हैज टू, you can say, because that is a very big administrative role of the speaker, and you can say speaker के पास managerial skills होनी चाहिए, right, excellent managerial skills होनी चाहिए, because he has to control the human behavior there, right, in the house. So that is why he has to keep all the channels open, right. So the next thing is that, okay, so the next thing is that we can say, right, so he, right, so this is important too, क्योंकि ये जो lunch on meetings हैं, right, ये this is important too, ये सब चीजें, this is important too, we can say, know the, right, know the views and reviews of, right, views and reviews of, we can say, various parties, right, various parties on different issues, right, various parties on different issues, right। क्योंकि हमें तो ये लगता होता है कि स्पीकर साहब, है ना, जब सेशन शुरू होना होता है, ठीक है, बस वो कोट पाके टाई लगा के आ जाते हैं और आके आराम से बैठ जाते हैं, बस इतना ही कहना होता है ना, साइलेंट साइलेंट प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, बस इतना ही कहना होता है ना, बस और तो कुछ करना ही नहीं है स्पीकर ने। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है स्पीकर के ऊपर, राइट, डिफरेंट इश्यूज, राइट। सो वी कैन से it is a, right, so it is a, then there is that, okay, it is a tightrope, it is a tightrope walk, right, we can say, okay, tightrope walk for the speaker, walk for the speaker, बहुत मुश्किल काम होता है ये स्पीकर के लिए, tightrope walk for the speaker, okay। So now I am giving you one question, right, for the mains examination you should try to practice that question, right। The question for the mains examination is that to ensure, right, to ensure that the parliamentary, right, that the parliament, sorry, to ensure that the parliament, right, functions the way, right, as it is intended to, as it is intended to under the, right,
Constitution, right? Under the Constitution, right, is a tightrope walk for the Speaker. Tightrope walk for the Speaker, right? For the Speaker, okay? So इसमें आपको वो कह सकता है डिस्कस, राइट? और आपको वो कह सकता है कमेंट, और आपको वो कह सकता है इलेबोरेट, राइट? आपको डिस्कस करने भी के लिए भी कह सकता है, आपको कमेंट्स के लिए भी कह सकता है, और आपको कह सकता है इलेबोरेट, राइट? इसका विस्तार करो। इलेबोरेट मीन्स किसी चीज का विस्तार करना होता है, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन है, राइट? सो आई एक्सपेक्ट दैट you will try to write the answer of this question and you will send that answer to me, right? So you need to write 200 words on this, right? 200 words you need to write on this, okay? So जरूरी है, right? सभी ने कोशिश करनी है, right? सभी का है ये, okay बेटा? Yes. Okay, sir. So beta, yes, I hope you will do it, right? So have you noted down the question? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. 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 नवकिरण बेटा समझ आ रही है? So now the next point is that, right? The next point is that, right? We can say that speaker, right? Speaker is an ultimately, right? Speaker is an ultimate, right? Ultimate we can say arbiter, means फैसलों को निपटाने वाला, right? Ultimate arbiter and right, ultimate arbiter, and we can say, right, interpreter, right, and interpreter, right, whose decisions are number one, final and binding, right? उसके decisions होते हैं जो वो final होते हैं and binding होते हैं, and number two, final and binding, and cannot be questioned, right? Cannot be questioned, right? Questioned, challenged, or criticized, right? उसके जो decisions होते हैं, right? So इसमें दो बातें इस discussions में से निकल रही है. One is the ultimate arbiter, right? मान लीजिए किसी दो पार्टीज के बीच, किसी दो पर्सन्स के बीच कोई डिस्प्यूट है, राइट? कोई डिफरेंसेस हैं, तो राइट, आप लोग मान लो मेरे पास लेके आ गए, तो मैं आपका arbiter हूँ, राइट? एंड देन इंटरप्रेटर, राइट? Interpreter of the constitution, of the rules of procedures, right? Of the previous proceedings, right? Of the conventions of the house, right? वो सब चीजों का इंटरप्रेटर है within the house, right? Not out of the house, okay? And next बात है कि उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो सभी को मानने पड़ेंगे, right? अदरवाइज तो फिर दिक्कत आएगी बिजनेस चलाने में गवर्नमेंट का, right? एंड दूसरी चीज है कि उसके डिसीजंस को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, और कोई भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, राइट? सो उसके डिसीजंस फाइनल हैं, राइट? इवन आप उसको कोर्ट में भी नहीं चैलेंज कर सकते. यस निशांत बेटा? सर यहाँ पे सर हम पढ़ते हैं जैसे सर कि स्पीकर की पावर्स में हम पढ़ते हैं कि सर स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज विद इन द हाउस. यस. अब सर जैसे कि सर सपोज कीजिए सर किसी बंदे पे सर एंटी डिफेक्शन लग गया, या फिर सर कोई भी बात है, तो सर उसमें सर जो 1992 वाला केस था वो सर किहोता होलोहन, उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि मतलब सर उससे हाउस के बाहर तो सर मतलब पूरे कंट्री में तो जो इंटरप्रेटर होता है फाइनल इंटरप्रेटर सर वो सुप्रीम कोर्ट होता है सर. यस यस यस, वो सुप्रीम कोर्ट है.
सर उन्होंने बोला था कि होता हॉलन में कि जो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सर उसके ऊपर, तो सर अगर स्पीकर चाहे तो सर उसको बदल भी सकता है फिर तो अंदर हाउस में। मैं आपको बताता हूँ बेटा, यूजली क्या है ना कि जुडिशरी ट्राइज टू रिमेन विद इन द लिमिट्स, राइट। जुडिशरी ने बस सिर्फ जस्टिस का ध्यान रखना है कि क्या जस्टिस मिला है, राइट। किसी मैटर को किस मेरिट के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया है स्पीकर ने, जुडिशरी डज नॉट गो इनटू दैट, राइट। यस यस, जैसे अभी बेटा ये केस था जो आपका कर्नाटका असेंबली का था ना। जी सर, जी सर, ठीक है? तभी पढ़ा हाँ था। हाँ, तो बेटा वो कर्नाटका असेंबली में के वो केस में है ना, एक बीजेपी का कोई एमएलए था, तो उसको मतलब उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था है ना स्पीकर ने, जो पहले वाला स्पीकर था। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि स्पीकर का जो फैसला था वो ठीक है और बीजेपी के एमएलए को वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, हालांकि गवर्नमेंट बीजेपी की है। राइट, सो इट मीन्स क्या है कि यूजुअली द कोर्ट्स does not go into the merits, right, does not look into that, you can say that how the speaker has, right, you can say matlab reached at the conclusion or reached at the final decision, right, right. तो जुडिशरी उसके बेटा अदर एस्पेक्ट्स देखती होती है, ओके, सो ये होता है। हाँ सर मतलब वो जो कियोता हलोहन वाला जो सर जजमेंट है वो कहीं ना कहीं सर वो थियोरेटिकल जजमेंट ही कह सकते हैं एक तरह से उसे। हाँ बेटा, क्योंकि क्योंकि देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट गेव दैट जजमेंट के disqualification on ground of defection, right, so that can be challenged into the court, okay, is it clear na, that can be challenged, but beta uske baad parliament does not you can say sorry, parliament has not made any amendment into the provision of the constitution so far, है ना। पार्लियामेंट ने लॉ नहीं चेंज किया, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन भी नहीं चेंज की, सो इट मींस दैट इज यू कैन से सब्जेक्ट टू द राइट। अगर कल को मतलब कोई बड़ा बेंच बैठ जाता है कोर्ट का, है ना, तो वो हाँ, तो वो बेटा उस डिसीजन को मतलब ओवर रूल कर सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, राइट। सर काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया बस मतलब। यस 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 यस, एंड बेटा you must be remember, I think last year or last to last year also, right, you can say some member from Bihar, right, was also disqualified, Rajya Sabha member tha wo, was also disqualified by the chairman of the Rajya Sabha, right, and beta he also went to the courts, right, but uska kuch nahi hua, right, so that is why यूजली कोर्ट कोशिश करती है कि वो अपनी मतलब मर्यादा में रहे, राइट, ये होता है। अदरवाइज ऐसे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स तो नहीं है, है ना, कोई लाइंस भी नहीं हम बना सकते, हम कोई बाउंड्री भी नहीं बना सकते यहाँ, सो दैट्स व्हाई हाँ ये होता है। कई बार आती भी है प्रॉब्लम सिस्टम में, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट, सो दैट इज द पॉइंट, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट इज बेटा रोल ऑफ स्पीकर, okay, role of speaker with respect to, right, with respect to regulating the with respect to regulation of the business of the house, right, house के business को कैसे चलाना है, right, business of the house, उसको लेकर के स्पीकर का रोल क्या है और क्या रहेगा, राइट, सो ये प्रोविजंस अब हम यहाँ करेंगे। स्पीकर्स की पावर्स ही चल रही हैं अभी, रोल चल रहा है, राइट, पावर फंक्शंस रोल, ओके, सो ये सो इसमें बेटा हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट नंबर 1 डिसाइडिंग द नंबर 1, राइट, डिसाइडिंग द admissibility of a question, right, deciding the admissibility of a question. First thing is that, right, admissibility of a question, whether a question should be admitted, right, to be replied or not. So that is the point, right, admissibility. So in this data, you should know that, right, you can say that members have a number of queries, right. So we can say that members
of members have a number of queries. Okay, have a number of queries, right? उनके बहुत सारे questions होते हैं, उनकी queries होती हैं, right? And it is not like that, right? It is not like that, right? That any member, okay, any member may, right, ask or put, right, any question or query, right, any question or query, right, from anybody, right, anytime, right? ऐसा नहीं होता कि आप जो मर्जी किसी से भी, है ना, पूछ लो, है ना, कब भी पूछ लो, तो ऐसा नहीं होता, है ना? जैसे आप मेरे से तो पूछ लेते हो कभी भी, लेकिन वहां नहीं चलेगा लोकसभा में, ठीक है? So because beta, if it will be like that there, right? If it will be like that, right? Then the floor of the house, right, will be like a vegetable market, right? Like a vegetable market. जहाँ शोर शराबा होगा, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है ना? Like a vegetable market. हो जाता है। हाँ, हाँ, चलो वो तो होता है, लेकिन अब तो देखो कंट्रोल के बावजूद होता है ना? अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, राइट? हाँ, है ना? तो बेटा like a vegetable market it will be there, right? So बेटा that is why there is a procedure, right? That is why there is a procedure, right? So what is the procedure? So if anybody has some query, or right, if anybody has some query, right, has some query, okay, or wants to ask something, right, or wants to ask some question, right, wants to ask some question, right, then right, he or she will submit it to the speaker, right? Speaker's office कह लो, speaker's chamber कह सकते हैं हम, right? Speaker's chamber, right? To the speaker, right? And then the speaker will decide, right? The speaker will decide, right, whether to admit some question or query, admit some question or query for reply, right? Some question or query for reply or not. क्या उसको admit करना है या नहीं करना, right? If admitted, right? If admitted, then when it will be answered, right? When it will be answered, right? So that time will also be determined by the speaker, right? ऐसा नहीं होता कि तुरंत हो, right? So ये इसकी explanation थी। सबको समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया सबको? ओके बेटा, अगर किसी की प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना प्लीज। ओके, हमने जिनके लिए ये चैप्टर शुरू किया था वो तो आते नहीं थी क्लास में, सो दिस इज द पॉइंट, राइट? सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਮੈਡਮ ਦਾ। नहीं कोई गल नहीं, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, he decides, he means the speaker decides, right, the forms in which the amendments, right, the forms in which the amendments, right, you can say maybe, right, moved to the motion, right, to the motion of thanks to the president,
right, to the president, right? Motion of thanks to the president's address. Sorry, president's address लिखना है यहाँ, to the president's address, right? President's address. So this is again important, right? So it means क्या होता है बेटा कि ऐसा होता है कि there are certain occasions, right, when the house is addressed by the president, right? There are certain occasions, okay, occasions when the house is addressed by the president. जब राष्ट्रपति आकर के संबोधन करता है हाउस को, right, by the president, right? Usually क्या होता है, the first sitting of Lok Sabha, sitting of Lok Sabha after the general election, first session of every year, and especially the president, if he wants, he can come to address the house, right? So जब president house को address करता है, right, उसके बाद, because president is the first citizen, he right, his office is the highest office in our country, so that is why then क्या होता है, हाउस की तरफ से प्रेसिडेंट का थैंक्स करना होता है, राइट? सो वो थैंक्स कैसे होता है बेटा, ऐसे नहीं होता कि हम थैंक यू कह देते हैं, वो थैंक्स बेटा ऑन रिकॉर्ड होगा, राइट? ऑन रिकॉर्ड मीन्स बेटा कि पहले हाउस की तरफ से, राइट, एक मोशन बनेगा, राइट, मोशन बनाया जाएगा, मोशन मीन्स एक प्रस्ताव बनाया जाएगा, राइट? उसके ऊपर लिखा जाएगा कि क्या बोलना है प्रेसिडेंट के थैंक्स में, राइट? वो सब लिखा होगा, राइट? तो वो उसको हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, राइट? सो बेटा if you can say any change is proposed in the motion of thanks, then for that there should be, right, for that we can say there is a particular performa, right, which needs to be followed, right? So only according to that the things should come into the house, okay? So you should take note of this, right? So the next point is that, third point is that you can say with regard to moving an amendment to a bill, with regard to moving, right, moving an amendment to a bill, right, with regard to moving an amendment to a bill, right, the president, the permission of the chair is required. Chair means the permission of the speaker, right, is required, right? किसी भी बिल को, बिल के अंदर आपने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करनी है, मूव करनी है, तो देन चेयर की परमिशन चाहिए, स्पीकर की परमिशन के बिना इट डजंट हैपन, राइट? क्योंकि बेटा आमतौर पर क्या होता है, बिल के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, राइट? एक बिल की फर्स्ट स्टेज होती है, राइट? सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन होती है बिल की, राइट? दैट इज द फर्स्ट स्टेज, ओके? एक बिल की सेकंड स्टेज होती है, ये मैं डिटेल में तो बाद में करवाऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे तो, राइट? जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज बेटा कमेटी स्टेज होती है, राइट? कमेटी स्टेज होती है, ये डिस्कशन स्टेज होती है, डिटेल्ड डिस्कशन स्टेज होती है, ठीक है? और ये स्टेज अमेंडमेंट स्टेज होती है, राइट? इस स्टेज पे ही अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वो की जाती है, राइट? एंड देन बेटा बिल की लाइफ में थर्ड स्टेज आती है, राइट? थर्ड स्टेज आती है, और जो बेटा थर्ड स्टेज होती है, राइट, थर्ड स्टेज आपकी वोटिंग स्टेज होती है। थर्ड स्टेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं पॉसिबल, कोई डिस्कशन नहीं पॉसिबल, राइट? ओनली एंड ओनली वोटिंग करनी होती है। वोटिंग फॉर व्हाट? whether to pass the bill or not, whether to adopt a bill or not, right? So third stage में अगर बिल अडॉप्ट हो जाता है, right, तो फिर बेटा वो बिल अगर हाउस में चला जाता है, right, means लोकसभा से राज्यसभा में और राज्यसभा से लोकसभा में, then the bill is moved to other house, right? and बेटा अदर हाउस में अगेन वही बेटा 3 स्टेजेस में से बिल गुजरता है,
right? Other house में से again वही 3 stages, right? And then अगर पास हो जाता है then it goes to the president for his assent, right? So ये एक है एक you can say, right? एक set मेथड है, राइट? प्रोसीजर है बिल को पास करने का। ओके बेटा, सो अगर आपने कोई अमेंडमेंट सेकंड स्टेज में इंट्रोड्यूस करनी है, उसके लिए पहले चेयर की परमिशन मींस पहले स्पीकर की परमिशन लेनी होती है। अगर राज्यसभा है तो पहले आपको चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज देयर, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, इट इज ही, राइट? द फोर्थ पॉइंट इज बेटा, इट इज ही who decides, right? It is he who decides, right, whether amendments to be, right, whether amendments to be moved, right, whether amendments to be moved, right, to various clauses of the bill, to various clauses of the bill, right, of the bill be allowed or not, राइट? अमेंडमेंट को अलाउ करना है या नहीं करना, ये भी उसका काम है। अगर वो मना कर देगा तो कर देगा, राइट? ओके, जैसे पिछली गवर्नमेंट में एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना था अपोजिशन ने, और स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उसको रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, आई वुड नॉट एडमिट इट, राइट? सो स्पीकर के पास बहुत पावर होती है विद रिगार्ड टू दिस, ओके? एंड नेक्स्ट बेटा कि द स्पीकर, right, speaker has to ensure, right, has to ensure, right, that the required, right, we can say quorum to initiate the, right, initiate the proceedings of the house, right, initiate the proceedings of the house, right, is complete, right? So speaker has to make it sure that the quorum is complete, right? If the quorum is not complete, in that case the speaker may, right, we can say adjourn the house, right, adjourn the sitting. If the quorum is not complete, right, is not complete, right, then the speaker, right, may adjourn the sitting, right, suspend the sitting, etc., right? So it is the constitutional responsibility of the speaker to make it sure that the quorum is complete, right? So this is very big thing, okay? So quorum, as far as the quorum is concerned, right, yes, the required quorum is 1/10 of the total strength of the house, right? 1/10 of the total strength of the house. So that is the quorum which is required for Rajya Sabha as well as for the Lok Sabha also, right? 1/10 of the total strength of the house. So that is the quorum which is required, right? It means in case of Lok Sabha, right, if there are 543 members, I would say now, right, because the 2 members have gone, 502 seats have gone, right? 543 का अगर हम 10% लेंगे, so that amounts to 54.3, right? So minimum how many members should be there? 54. 55 beta, not less than 1/3, right? So सर 54 लिख रहा है। नहीं बेटा, not less than 1/10 है बेटा, right? So अगर आप 54.5 लोगे तो इट मींस मेंबर तो कम हो गए, है ना? क्योंकि लक्ष्मीकांत के टाइम पे तो अभी ये प्रोविजन आई नहीं थी ना, 2 members वाली, right? So 55 members should be there. Okay? Okay. Okay, sir. Right. So आपको एक चीज बेटा और भी देखनी होगी कि बेटा जैसे हम उसमें करते हैं ना बेटा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कितना हो, आपको मालूम है ना? 545 का हमने 15% देखना है ना? तो ये बेटा कितना बनता है, देखो, है ना? ये बेटा कितना बनता है?
75 plus 6, right, and plus 0.75, right. So ये बेटा कितना बन गया? 81.75 है ना? 0.75. हाँ, सो बेटा यहाँ हम 82 नहीं लेते, 81 रखते हैं, बिकॉज वहां लिखा है कैन नॉट बी मोर देन 15%. अगर हम यहाँ 82 लेंगे तो दैट बिकम्स मोर देन 15%. ओके, सो बेटा हाँ हाँ ठीक है. सो बेटा इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, राइट. समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपको, और समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी डिस्कस होते हैं, राइट. सो दैट इज क्लियर. ओके, लक्ष्मीकांत के नए एडिशन में लिखा हुआ है ये नंबर? सर मेरे पास 5th है सर. ओके, पता नहीं मुझे तो 5th को. सर अभी अच्छा. लेटेस्ट चल रहा है सर, latest. ओके, हाँ सर एक बार देख लेता हूँ सर कि मैं हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि कुछ गलतियां हैं उसमें. बिल्कुल सर. सर वो वाला जो आपने कराया ना सर, स्पीकर का सर, जो वो वाला था स्पीकर का मतलब हटाने वाला, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, वो भी सर उसमें गलत दिया हुआ है. द देन मेंबर्स वाला जो केस था वो सर. यस यस यस. सो बेटा दैट इज देयर, राइट. इफ द quorum is not complete, then the speaker may adjourn the house, right, adjourn the house, right. So बेटा अब यहाँ क्या है, एक तो हमने quorum टर्म की है, एक बेटा यहाँ पर एक टर्म आ गई है adjourn, right, adjourn, right. सो बेटा ये जो इसको लेकर के बेटा जो हमारा हाउस का जब सेशन होता है, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को एडजॉर्न का नहीं पता होगा, एडजॉर्न का मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे सिस्टम में क्या है सेशन के लिए, राइट. वैसे तो मिनिमम 2 सेशंस होने चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द हाउस. सो अकॉर्डिंग टू दैट साल में 2 सेशन बनते हैं मिनिमम, राइट. लेकिन हमने तीन सेशन हम कंडक्ट करते हैं, राइट. मैंने आपको बताया था. सो ये होता है एंड ये होता है, राइट. वी कंडक्ट द थ्री सेशंस, मैंने आपको बताया था, राइट. सो ये जो है बेटा इसको हम सेशन कहते हैं. ये एक सेशन की ड्यूरेशन है, ये एक सेशन है, 3 सेशन है. और ये बेटा सेशंस के बीच में बेटा जो ये गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेस. ये पार्लियामेंट्री रिसेस होती है, राइट, सेशंस के बीच में. ओके, ये रिसेस होती है, राइट. 2 सेशंस के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड द रिसेस, पार्लियामेंट्री रिसेस, राइट. सो अब बेटा क्या है, जब बेटा सेशन होता है, मैं अब यहाँ बेटा इस चीज को एक मैं सेशन ले लेता हूँ यहाँ, राइट. मान लीजिए ये एक सेशन है, राइट. सो बेटा सेशन का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जब मर्जी बैठ जाओ, राइट. सेशन के लिए बेटा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर, राइट, रिक्वेस्ट्स द प्रेसिडेंट, राइट, टू invite the members, right, to invite the members to conduct a session, right, conduct a session of the house. सबसे पहली बात बेटा ये होती है, right, conduct a session of the house. One thing is that. Okay, is it clear? Yes, sir. ओके ओके. एंड बेटा जो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है, राइट, कि एवरी सेशन, राइट, हैज ए प्री डिटरमिन्ड एजेंडा. हर एक सेशन का बेटा एक अपना एजेंडा होता है, ठीक है. एजेंडा मीन्स द बिजनेस, राइट, विच विल बी ट्रांजेक्टेड, विच विल बी डन, राइट, द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड ड्यूरिंग द you can say session of the house, right, to be transacted during the session of the house, right, during the session. इसका मतलब है कि जब सेशन होगा उस सेशन के अंदर हमने क्या क्या काम करने हैं, हमारा क्या क्या बिजनेस होगा जो हमने कंडक्ट करना है, राइट. सो वो हर चीज उसके अंदर तय होती है, राइट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो बेटा उसमें ये रहेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, राइट.
right beta, the session has a you can say the session has a fixed time, right? उसमें टाइम फिक्स्ड होता है एजेंडा के अकॉर्डिंग कि अब हमने ये करना है, इतने दिन सेशन चलेगा, ऐसा रहेगा, राइट? द सेशन हैज ए फिक्स्ड टाइम। इज इट क्लियर बेटा? राइट। सो अब बेटा क्या होता है कि सेशन के अंदर बेटा फिर क्या चीजें आती हैं, राइट? सो बेटा पहली बात तो बेटा आपको ये देखना है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा आप कॉलेज में जाते थे, राइट? अप्रैल में या मान लीजिए जुलाई में आपका सेशन स्टार्ट होता था, राइट? और बेटा जुलाई में आपका सेशन शुरू होता था, राइट? और आपका सेशन बेटा मान लीजिए मार्च तक चलता था, राइट? इस सेशन के लिए बेटा क्या होता था, देयर वाज ए सेट सिलेबस, राइट? एक सिलेबस सेट होता था, राइट? क्योंकि बेटा ये क्लियर होता था, ठीक है, कि अब राइट मान लीजिए, ठीक है, मतलब कमल, अमन, है ना, नवकिरण या नवरीत या निशांत या कोई भी, है ना, कि इन लोगों की ये क्लास है, दैट सपोज फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की है क्लास इनकी, राइट? फाइनल ईयर की बेटा क्लास है, राइट? सो उसके अंदर बेटा ये तय होता है, राइट? फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की आपकी ये क्लास है, राइट? उसके लिए बेटा तय होता है कि दिस इज द सिलेबस, ये तय होता है बेटा, राइट? ऐसा ही होता है ना क्लास में, कि दिस इज द बेटा, दिस इज द सिलेबस, राइट? एंड बेटा दीज विल बी द आवर्स ऑफ स्टडी, राइट? कि इतने आवर्स ऑफ स्टडी होंगे आपके, राइट? हर चीज बेटा तय होती है, इज इट ओके ना, राइट? सो बेटा अकॉर्डिंगली बेटा काम चलता है, और जुलाई से सेशन स्टार्ट होके जब बेटा मार्च आ जाता है, राइट, तो आपको फिर कह देते हैं कि आज से आपके कॉलेज हैं जो वो बंद हो रहे हैं, राइट? क्योंकि आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, मींस जो काम एजेंडा पे था, जो सिलेबस में करना था वो कर चुके हैं हम, और अब आपको फ्री किया जाता है, राइट? ओके, फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा ही होता है ना? ओके, सो बेटा, राइट? सो बेटा लेकिन बेटा क्या होता है बेटा, इस सेशन के अंदर बेटा आपकी बेटा डेली बेसिस पे आपकी बेटा क्लासेस लगती हैं, है ना? हर रोज आप आते हो कॉलेज में पढ़ने के लिए, राइट? हर रोज आपकी बेटा क्लासेस होती हैं, राइट? हर रोज आपकी क्लास होती है बेटा, राइट? ये वेरियस क्लासेस होती हैं इसमें, ओके? सो ऐसा ही बेटा पार्लियामेंट में है, राइट? पार्लियामेंट में बेटा क्या है कि ये आपका एक पूरा सेशन है, इसको हम सेशन कहते हैं, और इस सेशन के अंदर बेटा हर रोज आपकी बेटा क्लास होती है, राइट? ये जो आपकी हर रोज क्लास होती है सेशन के अंदर, इसको बेटा हम सिटिंग बोलते हैं, राइट? पार्लियामेंट में सिटिंग होती है, समझे बात? ओके, सो इट मीन, हाँ, सो बेटा इट मीन्स पार्लियामेंट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, वन इज द सेशन, ओके, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज द सिटिंग, राइट बेटा? अब क्या है बेटा कि सेशन को, राइट, सेशन को बेटा स्टार्ट करना है और सेशन का फॉर्मल एंड करना है, ये पावर प्रेसिडेंट की है, राइट? सेशन से रिलेटेड दो बातें आएंगी। एक बात क्या आएगी सेशन से रिलेटेड बेटा, कि हमने सेशन का स्टार्ट करना है, राइट? सिग्नेचर करना है सेशन का, राइट? स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज क्या है बेटा, कि हमने सेशन को बेटा क्लोज करना है, राइट? फॉर्मल एंड करना है, क्लोज मीन्स फॉर्मल एंड करना है हमने सेशन का। और बेटा ये दोनों चीजें किसके हाथ में है? ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, क्योंकि बेटा आपकी क्लास का टीचर अपनी मर्जी से आपको नहीं कह सकता कि आपको कल से नहीं आना, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। ये प्रिंसिपल ऑर्डर करेगा, राइट? कि क्लासेस अब बंद कर दो, सिलेबस हो चुके हैं, सेशन पूरा हो चुका है, राइट? सो ये जो हेड होता है उसका काम होता है, राइट? सो इट मीन्स बेटा every decision
regarding the right start of the session means invitation to the members, right? Means invitation to the members, or we can say regarding the formal end of the session that is taken by the President of India on the advice of the Prime Minister. Is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब बेटा सिटिंग की बात आती है, राइट? सिटिंग बेटा मान लीजिए, है ना बेटा, आज हमारी क्लास शुरू हुई, राइट 4:30 बजे बेटा क्लास हुई, राइट? क्लास में बेटा या तो आके किसी बच्चे ने मतलब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की, है ना, उसने इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, उसने बदतमीजी की मेरे साथ, लेट्स सपोज, है ना, या फिर बेटा मुझे कुछ और इमरजेंसी आ गई, है ना, तो क्या होगा बेटा, मैं आपको ये कहूंगा बेटा कि आपकी आज की क्लास मैं छोड़ के जा रहा हूं, राइट? ओके बेटा, तो मैं आपकी जो क्लास है मैं उसको खत्म कर दूंगा आज, है ना, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसा होता है, ठीक? सो बेटा जब बेटा मैं आज आपकी क्लास छोड़ के जा रहा हूं तो उसमें बेटा दो बातें आएंगी, राइट? एक बात उसमें क्या होगी बेटा कि मैं आपको, राइट, आई विल डिफाइन द, राइट, आई विल डिफाइन द, राइट, यू कैन से आई विल डिफाइन द टाइम ऑफ द नेक्स्ट क्लास, राइट? मैं आपको ये बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, परसों होगी, 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, है ना, या कब होगी, राइट? सो आई विल डिफाइन द टाइम एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। एक तो इसमें बेटा ये पॉसिबिलिटी है, समझे बेटा? ओके। और बेटा दूसरी चीज होती है बेटा कि आई विल नॉट डिफाइन द टाइम एंड पीरियड ऑफ द नेक्स्ट क्लास, राइट? मैं जा रहा हूं, मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, है ना, आई विल लेट यू नो, राइट? So no decision about the next class, right? No decision about the next class, right? Right? तो बेटा क्लास की जगह पे आप यहाँ बेटा सिटिंग कर सकते हो इस केस में, ठीक है? मैं जस्ट आपको कंफर्टेबल रखने के लिए मैं आपको यहाँ क्लास लफ्ज यूज करता हूँ, ठीक है? तो ऐसा भी होता है, राइट बेटा, कि आपकी क्लास मैंने छोड़ दी है, राइट? अगली क्लास कब लूंगा, आई विल लेट यू नो, ओके? सो ये होता है, राइट? सो बेटा इसमें क्या होता है, अब बेटा ये 4 ऑप्शंस बन गई हैं, राइट? सो इसमें बेटा क्या होता है, ये जो स्टार्ट वाला केस है बेटा, इसको हम बोलते हैं इनविटेशन, ओके? इनविटेशन, राइट, ऑफ द सेशन। और ये जो क्लोज वाला है, जो फॉर्मल एंड प्रेसिडेंट करता है, इसको बेटा हम बोलते हैं प्रोरोगेशन, राइट? प्रोरोगेशन, राइट, प्रोरोगेशन, ओके? और ये बेटा दोनों चीजें हैं जो मैं आपकी क्लास छोड़ के जा रहा हूं, है ना, इन दोनों चीजों को बेटा हम एडजर्नमेंट कहते हैं, राइट? राइट, हाँ। जो आपका बेटा ये वाला केस है जहां मैं आपको अगली क्लास के बारे में सूचित करके जा रहा हूं कि द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर 3 days और ऑन नेक्स्ट मंडे भी है, राइट? सो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट। ये बेटा आपकी एडजर्नमेंट है, ADJOURNMENT, राइट? एडजर्नमेंट। और एक बेटा ये केस है जिसमें बेटा अगली क्लास कब होगी बेटा नहीं पता आपको, कि कल जाना है, परसों जाना है ना, 3 दिन बाद जाना है, वीक बाद, मंथ बाद जाना है, कब जाना है, अनिश्चित समय, अनिश्चित काल, इसको बेटा हम कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, राइट? एडजर्नमेंट साइन डाई, राइट? सो बेटा ये बेटा टर्म्स हैं इसमें, राइट? सो ये जो होता है बेटा एडजर्नमेंट साइन डाई, राइट? सो इस चीज की बेटा जो पावर रहती है, right, this power remains with the presiding officer of the house, means speaker, लोकसभा के केस में, right? So ये स्पीकर के अंदर है पावर, means स्पीकर के अंदर है पावर, ये adjournment and adjournment sign die and invitation and prorogation of the session, ये बेटा किसके अंदर है, ये प्रेसिडेंट की पावर है, राइट? इन्विटेशन सेशन का होगा, प्रोरोगेशन सेशन का होगा, राइट?
एडजर्नमेंट सिटिंग का होगा, एडजर्नमेंट साइंड आई सिटिंग का होगा। ओके, सेशन का एडजर्नमेंट नहीं होता। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, सो ये चीज बस इसको ऐसे ही बना लेना है ना, आप फिर कभी नहीं भूलोगे कि ये चीजें क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने आपको ये करवाया है। ओके, सो now the next point, right? This is about this adjournment, etc. We have done it, right? So the next thing is that beta, he means speaker, right? Speaker decides about स्पीकर डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा बेटा? वन, ओके, व्हेन ए मेंबर कैन स्पीक, कब कोई मेंबर बोल सकता है हाउस में, राइट? व्हेन ए मेंबर कैन स्पीक, राइट। दूसरी चीज है इसमें, ठीक है, कि हाउ लॉन्ग ए मेंबर कैन स्पीक, कितना लंबा बोल सकता है, how long a member can speak in the house, right? Okay, तीसरी चीज इसमें है बेटा कि it is the speaker, right, who decides, right, to ask a member to discontinue his speech, right, about the continuance of the speech of the member, right, continuance of the speech of the member, right, continuance of the speech of the member, right? So उसी ने ही डिसाइड करना है कि अब किसी मेंबर को कितनी देर तक बोलने का मौका देना है, राइट? कई बार किसी की स्पीच बीच में भी रोक दी जाती है, राइट? सो दैट इज देयर, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट इज बेटा whether something, right, whether something said by a member, right, said by a member, right, whether something said by a member be right on record, right, be on record, क्या जो किसी मेंबर ने बोला है उसको रिकॉर्ड पे रखना है, right, as part of the proceedings or not, right, as a part of the proceedings or not, right, क्या उसको रिकॉर्ड पे रखना भी है या नहीं रखना, that will also be decided by the, you can say, presiding officer of the house, right? So ये सब चीजें presiding officer की मर्जी होती है, means speaker की मर्जी रहेगी, right, इन सब चीजों को लेकर के। Okay, so now the next point is that, right, so speaker may order a member, right, speaker may order a member to be, right, may order a member to be withdrawn from the house, to withdraw from the house, right, withdraw from the house। स्पीकर किसी मेंबर को कह सकता है कि आप हाउस में से निकल जाओ, राइट, जैसे टीचर कह देता है स्टूडेंट को कि गेट आउट ऑफ द क्लास, राइट। सो स्पीकर भी वैसे किसी मेंबर को हाउस में से जाने को बोल सकता है, विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, राइट, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। सर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बच्चे सर मना कर देते हैं बाहर जाने को। वो तो चलता है, खैर ऐसा तो है ना, लेकिन फिर वो वहां फिर इनके पास तो वो होते हैं ना, जो मार्शल होते हैं, राइट, सर उठा के ले जाएंगे। हाँ, इनके पास तो मार्शल होते हैं, फिर ये तो करते ही है ना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी इनको, राइट। सो दैट इज देयर, राइट। सो नेक्स्ट है, इफ ए मेंबर, राइट, इफ ए मेंबर disobeys, right, disobeys speaker's orders or directives,
right? Speaker's orders or directives, right? Speaker's orders or directives, he may be named by the speaker. मैंने आपको पहले भी बताया था, right? He may be named by the speaker. Named by the speaker, right? Named by the speaker. उसको speaker name कर सकता है, right? And in such case, right, he may have to withdraw from the house, right? And in such case, he may have to withdraw from the house, right? Withdraw from the house, right? उसको फिर उठा के बाहर छोड़ आएंगे जब स्पीकर ने नेम कर दिया ना उसको, ये होता है। ओके, सो ये हो गया पॉइंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज देयर दैट राइट, ही इज द, ओके, ही इज द, आप नोट कर रहे हो ना बेटा? सर Yes. यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट आई थिंक 9th पॉइंट था, राइट? सो वी कैन से दैट स्पीकर इज द गार्डियन, right, of the rights and privileges of the house. वहां हमने members की बात की थी बेटा, यहाँ हम house की बात करते हैं, right? Privileges of the house, its committees, right? And इसके साथ चलो आप members भी लिख लो, वैसे तो हम वहां लिख चुके हैं, and members, right? So इन सब के जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको बचाना, उनका जो गार्डियन है वो स्पीकर रहता है, राइट, इन द हाउस, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेटा, इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर, राइट? इट इज द सोल, कैन से डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर, राइट, ऑफ द स्पीकर टू refer any question of privilege, right? Any question of privilege to the committee on privileges for, right? To the committee, we can say on privileges for, right? Committee on privileges for investigation, कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, एग्जामिनेशन, आप इसको एग्जामाइन करो, एंड रिपोर्ट, और आप इसके ऊपर रिपोर्ट दो, क्योंकि एक्शन तो बाद में स्पीकर नहीं लेना होता है। सो इट मीन्स बेटा, कीप इट इन माइंड दैट इन हाउस, हर हाउस में, राज्यसभा में भी एक बेटा स्पेशल कमेटी होती है, उस कमेटी को कहते हैं कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, राइट, ऑफ द हाउस मेंबर्स, और जो आपकी हैं कमेटी, राइट, पार्लियामेंट्री कमेटी, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, ये कमेटी होती है, राइट? सो स्पीकर अपने आप डिसीजन नहीं लेता, राइट, क्योंकि सो दैट वो इम्पार्शियल रहे, राइट? सो स्पीकर मैटर कमेटी ऑन प्रिविलेजेस को रेफर कर देता है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस फिर स्पीकर को रिपोर्ट बना के देती है, पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करके, और जब वो रिपोर्ट आती है उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर फिर स्पीकर डिसीजन लेता है, राइट? सो ये बात होती है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। ओके, द नेक्स्ट है बेटा, द नेक्स्ट थिंग इज दैट द 11th point, right, is that the decision of the house, right, the decisions of the house, right, are communicated, right, are communicated, right, to the outside, right? तो वर्ल्ड कह सकते हैं आप, इंडिविजुअल एजेंसीज कुछ भी लिख सकते हो, राइट, बाय द स्पीकर ओनली, राइट, बाय द स्पीकर ओनली, राइट? सो स्पीकर पे ही जो हाउस के डिसीजंस हैं उसको बाहर निकालना होता है, राइट, लोगों में पेश करना होता है कि ये डिसीजन है हाउस के। ओके, सो दैट इज, राइट, ये बेटा अथॉरिटी है स्पीकर की, राइट?
ऐसे कोई बोल सकता है तो वो उसका मतलब ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, जो स्पीकर कहेंगे उसी को करेक्ट और सही माना जाएगा, राइट। एंड देन बेटा स्पीकर डिसाइड्स अबाउट, राइट, स्पीकर डिसाइड्स अबाउट we can say the right form and manner, the form and manner in which, right, in which the proceedings of the house be published, right, हाउस की प्रोसीडिंग को पब्लिश कैसे करना है, राइट, उसका जो फॉर्म क्या होगा, मैनर क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, राइट, वो स्पीकर डिसाइड करता है, वो स्पीकर का प्रिविलेज है, राइट, ये ड्यूटी है स्पीकर की, स्पीकर का काम है, राइट, हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, सो ये चीज है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा ही इश्यूज वारंट्स टू, इट मींस स्पीकर इश्यूज, राइट, warrants to, right, warrants to we can say execute the orders of the house, right, to execute the orders of the house, right। so beta warrant भी एक तरीके का ऑर्डर होता है अथॉरिटी का, राइट, जो हाउस में ऑर्डर, जो हाउस का ऑर्डर है, राइट, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए फिर स्पीकर ऑर्डर करता है कि इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, राइट। So the next point is that, which is the 14th point, right? That is, we can say the entire parliamentary estate means जो parliament की property है, building है, right? The entire parliamentary estate is, we can say, under the authority of the speaker, right? Under the authority of the speaker, right? तो वो स्पीकर की अथॉरिटी के अंडर होता है जो भी आपका पार्लियामेंट्री एस्टेट होता है, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, राइट, सो द नेक्स्ट इज द 15th पॉइंट, राइट। सो व्हेन ए डिसीजन ऑफ द हाउस इज टू बी, व्हेन ए डिसीजन ऑफ द हाउस इज टू बी ascertained, is to be ascertained, right, when a decision of the house is to be ascertained, right, on a motion by a member, on a motion by a member, right, by a member, right, the question is put before the house by the speaker, the question is put before the house, right, by the speaker. Okay, the question is put before the house by the speaker, right. So when a decision of the house is to be ascertained on a motion by a member, कई बार बेटा ऐसा होता है कि एक मेंबर है, राइट, लेट्स सपोज मिस्टर डी एक मेंबर है, राइट, वो बेटा चाहते हैं कि ये कोई मैटर है, ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, राइट, इस मैटर के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, राइट, हाउस की जो यू कैन से ओपिनियन, हाउस का डिसीजन चाहिए, राइट, डिसीजन ऑफ द हाउस, राइट, ऐसा होता है, राइट। सो देन बेटा क्या होगा कि जो मिस्टर डी है ये बेटा इसको प्रेजेंट करेगा हाउस में, राइट, स्पीकर मींस वो जो उनका सेक्रेटेरिएट होता है वहां जाएगा लोकसभा का, राइट। सो वो प्रेजेंट होगा, राइट, प्रेजेंट होगा, और बेटा प्रेजेंटेशन के बाद, राइट, प्रेजेंटेशन के बाद बेटा उसको स्पीकर देखेगा, राइट, स्पीकर देखने के बाद बेटा वो हाउस के सामने अनाउंस करेगा, राइट, अनाउंसमेंट करेगा, राइट, कि ये मेंबर, राइट, इस चीज के ऊपर एक मोशन लेके आ रहा है, राइट, और ये हाउस का इसके ऊपर ओपिनियन चाहता है, राइट। देन बेटा इसको हम कहते हैं कि टू सीक ए लीव ऑफ द हाउस, हाउस की परमिशन लेना, राइट, वो स्पीकर परमिशन लेता है हाउस की
अगर हाउस परमिट करता है तो देन स्पीकर उसको एडमिट करेगा, अगर हाउस परमिट नहीं करता तो स्पीकर उसको डिक्लाइन कर देगा, राइट। सो ये स्पीकर की जिम्मेवारी होती है, राइट, टू ब्रिंग इट बिफोर द हाउस। ओके, सो दैट इज द पॉइंट, राइट। एंड नाउ we can say, right, the next point is that, right, the question of points of order, right, we can say that is the 16th point, right, that is the questions, right, of points of order, questions of points of order, right, questions of points of order, right। इसके ऊपर क्या है बेटा, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि it is the, right, it is the, we can say, speaker who decides, right, it is the speaker who decides, right, it is the speaker who decides whether a matter raised is in order or not, whether a matter raised is in order or not, right, is in order or not, right। सो ये स्पीकर ने डिसाइड करना होता है बेटा, ये क्या होता है, राइट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको पहली बात ये बताता हूं कि हाउस के अंदर जो भी कार्यवाही चलती है, राइट, भले आपको कोई मोशन इंट्रोड्यूस करना है, भले आपको कोई डिस्कशन करनी है, भले कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है, किसी चीज में कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करनी है, कोई रिपोर्ट पुट अप करनी है हाउस के सामने, राइट। सो उसके लिए बेटा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, राइट। हर चीज के लिए बेटा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, यू नो, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, राइट। और वो जो स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है बेटा, राइट, उस स्पेसिफिक प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, कि ये एक बेटा ऑर्डर है, आपको इस तरीके से करना होगा, राइट। जैसे बेटा कई बार हम लोग मतलब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं हम, तो उसके अंदर भी ये लिखा होता है ना, कि यू कैन से, है ना, मान लीजिए आपसे ये पूछा है ना, कि आपकी मतलब एज कितनी है ना, आप वहां लिख रहे हो 22, है ना, तो वहां बेटा दो बॉक्सेस बने होते हैं, एक बॉक्स में 2 और दूसरे बॉक्स में 2 लिखना होता है। और अगर आप एक बॉक्स में ही 2 लिख दोगे, है ना, 2 टाइम्स 2 लिख दोगे, तो चांसेस है कि शायद आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से बेटा, राइट, वहां वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को मतलब आप यू कैन से इस ऑर्डर में लगाओ, है ना, ये करो वो करो, तो वो क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एक, राइट, तो उसको हम बेटा ऑर्डर कहते हैं, राइट। सो बेटा स्पीकर का ये काम होता है कि टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज, वी कैन से, इन द ऑर्डर, राइट, कि हर चीज स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल रही है, राइट, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ओके, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ओके बेटा, ठीक है, राइट। तो Yes, sir. हाँ ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये बेटा हमारे घरों में भी तो मर्यादा होती है ना बेटा, है ना, कि मतलब ठीक है, मतलब शूज आप मतलब ठीक है, मतलब किचन में जाके आप मतलब उतार के नहीं रखोगे, है ना, या मतलब किचन में बैठ के आप मतलब शू पॉलिश आप नहीं करोगे, है ना। सो कुछ होती है मर्यादाएं घरों की भी, है ना। सो इन चीजों को हम बेटा मतलब के ऑर्डर कहते हैं, और ये जो मुखी है, उसने, जो हेड है, उसने इंश्योर करना होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, राइट। सो अगर बेटा और बेटा हर मेंबर का राइट है, राइट, कि वो बेटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स कि दिस थिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोसीजर, दिस थिंग इज नॉट इन द ऑर्डर, राइट, राइट। जैसे हम अपने मतलब छोटे बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हम शिकायत लगाते रहते हैं ना मम्मी डैडी के पास, है ना, है ना,
कि देखो इसने अपने मतलब शूज उतार के मतलब कहाँ रख लिए, है ना, मतलब ये ऐसे करता है, ऐसे करता है ना। तो वो बेटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात ही होती है ना, कि राइट जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, राइट बेटा। सो एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राइट। और जब बेटा ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है, राइट, तब बेटा क्या है, स्पीकर ने बेटा डिसाइड करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है, राइट, ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने का भी एक अपना स्पेसिफिक मुझे प्रोसीजर है, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रोसीजर। ओके, सो ये होता है, राइट। सो ये स्पीकर ने देखना होता है। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट क्या है बेटा कि स्पीकर हैज, you can say, certain residuary powers, right? Next is beta, speaker has a certain, we can say, right, residuary powers, right? Residuary powers वो होती हैं जो कहीं मेंशन नहीं की होती, right? Residuary powers, right, under the rules of procedure, right, under the rules of procedure। वहां इन्होंने लिख दिया बेटा कि जो बाकी बचती शक्तियां हैं वो भी स्पीकर के पास हैं, है ना, रेजिडुअरी पावर्स, राइट। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्होंने बना दिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, राइट, वो बेटा बना के एंड देन बेटा इन्होंने लास्ट में क्या लिख दिया कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो हम पार्लियामेंट को देते हैं। मींस जो यहाँ नहीं लिखा कोई सब्जेक्ट, है ना, अगर ऐसा सब्जेक्ट रेज होता है तो वो उनके पास चला जाएगा, राइट। So that is there. Okay. So next is beta, you can say the next power इसी के अंदर आएगी point number 18, right? So according to the point number 18 we can say, right, here is that point number 18 में क्या है, right? So वहां बेटा लिखा हुआ है कि all matters which are not specifically, right, all matters which are not specifically, right, which are not specifically provided under, right, provided under the, right, provided under the rules, provided under the rules, and all questions, right, and all questions which relate to the working of the rules, which relate to the working of the rules, right, working of the rules are regulated or decided by the speaker, right, are regulated by the speaker। So important बात है ये, okay, are regulated by the speaker। So here the point is that what is there, that all matters, right। So the point, what is the point, that all matters which are not specifically provided in the rules, जो matters rules में नहीं लिखे गए, one point is that, right। And second is that जो questions, right, and all questions, right, relating to the working of the rules, right, are regulated by the speaker। वो speaker की power है, speaker will decide कि अब वहां क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा that will be final and okay, right। So this is about the 18th point, right, 18th point, right। And the next is beta, the direction issued by the speaker, right, the directions, right, issued by the speaker, right, issued by the speaker, right, speaker, we can say, are treated as right, sacrosanct, right, sacrosanct, and right, sacrosanct as the rules of procedure, as the according to the rules of procedure, right। So बेटा पहली बात तो sacrosanct क्या होता है मालूम है आपको? No, sir. निशांक, what is it? Sir, some law which is above all. हाँ, sacrosanct बेटा वो चीज होती है जिसको हम सही मानते हैं, राइट, सही मानते हैं, राइट। जैसे बेटा क्या है कि जो हमारे
अगर मैं सिखों की बात करूं, ठीक है बेटा, अकाल तख्त से बेटा जो भी हुक्म आता है, सर ठीक है, सो बेटा उसको हम बेटा सैक्रोसैंक्ट मानते हैं और वो सभी को उसको मानना पड़ता है। सो इसी तरीके से बेटा लोकसभा के अंदर स्पीकर का ऑर्डर डायरेक्शन होती है, राइट। सो उसको मानना होता है। ओके, सो सर एग्जैक्ट मीनिंग की आवेगा इधर? बेटा सैक्रोसैंक्ट बेटा वही हो गया बेटा, वी कैन से दैट, राइट, यू कैन से कुछ मतलब जो यू कैन से, राइट, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, हम उसको ये मानते हैं। ओके, जो कि Okay, हमेशा, सर ठीक पुण्य है, में बोलते हैं हिंदी में, सर हैं? पुण्य में बोलते हैं, कैसे, पुण्य क्या में बोलते बोलते हैं? हैं हिंदी में, हाँ हाँ पुण्य हाँ में। हाँ, इट मीन्स क्या है कि वो चीज बेटा जिसको हम मतलब एब्सोल्युटली राइट मानते हैं, राइट, मतलब राइट, मतलब ऑल करेक्ट मानते हैं, वो चीज होती है, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज बेटा, राइट, सो वी कैन से ऑन मैटर्स रिगार्डिंग, right, on matters regarding, right, interpretation of, right, interpretation of, we can say, interpretation of the constitutional provisions of the, right, constitutional provisions, right, constitutional provisions, we can say, right, constitutional के यहाँ आई थिंक स्पेलिंग गलत हुए हैं, नहीं ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल provisions relating to the house or rules of procedure, relating to the house or rules of procedure, right, house or rules of procedure, right, relating to the house or rules of procedure, right, we can say rulings of speaker. Rulings means orders of speaker, right? Rulings of a speaker, right, we can say are accepted by all the members, are accepted by all the members, right, are accepted by all the members and remain final, right, and remain final, or wo final रहेगी, okay, and remain final, right. So the next thing is beta, that is insofar, right, insofar we can say, right, as certain matters pertaining to, insofar as certain matters, right, certain matters pertaining to, insofar as certain matters pertaining to the relations between the two houses of parliament, relations between the two houses of parliament, right, relations between the two houses of parliament are concerned, right, are concerned, we can say, he enjoys special position under the constitution. It means speaker enjoys special position under the constitution, right, special procedure, position under the constitution, okay, under the constitution. So that is there, right, under the constitution. So that is the point, right. So it means जहां तक लोकसभा और राज्यसभा के रिलेशंस की बात है, उसमें स्पीकर की एक अहम भूमिका रहती है, राइट। सो दैट इज राइट। नेक्स्ट है बेटा, दैट इज द ही certifies, right, he certifies money bills, right, money bills, and decides finally, right, and decides, we can say finally, right, finally, what are the money matters, right, what are the money matters, उसने डिसाइड करना है कि कौन सा मैटर मनी मैटर है, right, what are the money matters by reason of Lok Sabha's, by reason of Lok Sabha's,
right, overriding powers, right, overriding powers, right, on financial matters, right? फाइनेंशियल मैटर्स में लोकसभा की ओवरराइडिंग पावर है, इस वजह से स्पीकर को ये पावर मिलती है। क्या पावर मिलती है कि स्पीकर decides and certifies, speaker decides whether a bill is money bill or not. If according to the speaker a bill is money bill, then the speaker will certify that bill, right? And he decides finally that what matters are money matters or not, right? आपको मालूम होगा बेटा, दिया था सर उन्होंने किसमें, सर आधार बिल वाले केस में क्या हाँ 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 बेटा, हाँ वो स्पीकर का फैसला फाइनल है। वो भी केस बेटा सुप्रीम कोर्ट में गया था, बट सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफियर इन दैट। ओके, सो इसमें बेटा क्या है कि क्वेश्चन क्या है, मनी बिल, राइट? यू नो दैट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, वन थिंग, and money bill can be introduced in Lok Sabha only on the recommendation of the President of India, right? So it means pehle bill, it will come into Lok Sabha, right? Speaker will take a decision whether the bill is money bill or not, right? If speaker finds and decides that the bill is money bill, then he certifies it, right? And with the speaker's certification, that bill is sent to the President of India for his recommendation, right? Then President recommends, and after the recommendation of the President, the bill is introduced into the Lok Sabha, right? And once the bill is introduced in the Lok Sabha, if Lok Sabha passes the bill, then it goes to the Rajya Sabha. But Rajya Sabha absolutely has no powers in this case, right? It can only delay the bill for certain time, right? Even if Rajya Sabha refuses the bill, if Rajya Sabha declines to pass it, if Rajya Sabha suggests amendments, etc., right? Even then the Lok Sabha may ignore any of the suggestions of the Rajya Sabha, and the bill shall be deemed to have been passed by the both the houses, right? And the bill will be sent to the President. And as far as the money bill is concerned, right, President cannot, you can say, exercise veto power on the money bill, right? So this is how the money bill is passed, right? You know that the provisions related to the money bill are there in Article 110. Yes, Article 110 of the Constitution contains the provisions related to the money bill, right? And it is the Constitution that you can say that provides that the money bill can be introduced only into the Lok Sabha on the recommendation of the President. ये कहाँ लिखा बेटा? Where has it been written in the Constitution? शाबाश, एनीबॉडी? कहाँ लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में? गोलो भाई, थक तो नहीं गए? सर अच्छा, ओवरडोज तो नहीं हो गया? नवकिरण बेटा, ओवरडोज तो नहीं हो गया? नहीं सर, नहीं, बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा ठीक है। सो बेटा आर्टिकल 117 में जहां बेटा फाइनेंशियल बिल की बात है ना, तो वहां ये लिखा हुआ है, ओके राइट? सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, 117 में लिखा हुआ है ये, ओके? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो this is there, right? So next is beta, we can say, right, the speaker presides over the joint sitting of the two houses of parliament, right? We can say the speaker, right, presides over the joint sitting, right, of the two houses of parliament. राइट? सो बेटा अब यहाँ हमने ये देखना है, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमने थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन related to the joint sitting of the two houses 108. Yes, is contained in Article 108, right? So Article 108 of the Constitution provides for the joint sitting of the two houses of Parliament, right? So as far as the joint sitting is concerned, beta, joint sitting कब होती है? पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बिल्स हैं बेटा, राइट, वन इज द ऑर्डिनरी बिल, राइट, एक तो ऑर्डिनरी बिल होते हैं जिनको हम साधारण बिल कहते हैं, राइट, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव कानून बनने से पहले एक प्रस्ताव के रूप में आता है कोई भी मैटर, और उस प्रस्ताव को हम बिल कहते हैं, राइट. सो दैट इज देयर. सो वन इज द ऑर्डिनरी बिल एंड द सेकंड इज यू कैन से मनी बिल. बेटा किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज उसको थोड़ा. सेकंड इज द मनी बिल, राइट, मनी बिल. एंड द थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट बेटा. थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज में ले लेता हूँ, राइट, बाकी हम डिटेल में बाद में करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट, दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज वी कैन से, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब इसमें बेटा क्या है कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा हैज you can say absolute powers almost, so that is why, sorry, Lok Sabha has absolute powers almost, so that is why money bill के मैटर में joint sitting हो ही नहीं सकती, because joint sitting का meaning क्या होता है बेटा, to resolve a, right, deadlock between the two houses of parliament, right, to resolve a deadlock between the two houses of parliament, right, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. जब बेटा दोनों हाउसेस, ठीक है, मतलब मैं ना मानू वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, तब उसको निपटाने के लिए हम ये ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, राइट. सो मनी बिल के केस में तो राज्यसभा का मानना ना मानना कोई फर्क नहीं होता, राइट. एंड दूसरी चीज है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इस केस में भी नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 368 provides that, right, a constitution amendment bill shall be passed by, right, both the houses separately. वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि लोकसभा उसको सेपरेट पास करेगी, राज्यसभा उसको सेपरेट पास करेगी. इट मीन्स दोनों हाउसेस इकट्ठे मिलकर बैठकर उसको पास नहीं कर सकते. सो इसमें भी नहीं होगा, राइट. So the important point to be noted here is that joint sitting can be held in case of ordinary bills. Okay, so very important point, right? So the second thing is that I have told you that joint sitting is held to resolve a deadlock between the two houses. अब हम deadlock की बात करते हैं कि ये deadlock क्या होता है. Deadlock ऐसे होता है बेटा कि अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की ही बात करूंगा यहाँ, क्योंकि मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में से स्टार्ट हुआ है, राइट, लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया है बेटा, और लोकसभा में वो बिल पास होने के बाद वो बिल जाता है बेटा राज्यसभा में. ओके, राज्यसभा में. और जब बेटा वो बिल राज्यसभा में गया, राइट, तो राज्यसभा के पास बेटा ऑप्शंस हैं. एक तो क्या है कि राज्यसभा उस बिल को एक्सेप्ट कर ले, पास कर दे, राइट. अगर राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया तो झंझट खत्म है. चलो फिर भी मैं आगे बात करता हूं, उसको पास कर दे, राइट. दूसरा क्या है कि राज्यसभा उस बिल को डिनाई कर दे. डिनाई मीन्स उसको रिजेक्ट कर दे, राइट. और बेटा तीसरी ऑप्शन क्या है कि राज्यसभा में अमेंड द बिल, राज्यसभा ने उस बिल में कोई अमेंडमेंट्स कर दी, राइट. राज्यसभा में डू द अमेंडमेंट्स इन द बिल, राइट, अमेंडमेंट्स इन द बिल, राइट. एंड बेटा फोर्थ ऑप्शन क्या है कि राज्यसभा हैज टेकन नो एक्शन ऑन द बिल
and the 6 months have been elapsed, right? No action on the bill. राज्यसभा ने बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया and 6 months have been elapsed. और बेटा 6 महीने पूरे हो चुके हैं, right? Have been elapsed. 6 महीने गुजर चुके हैं. Is it clear? ये 4 ऑप्शन है राज्यसभा के पास. ओके बेटा, क्लियर ना? Yes. हाँ. Yes. सो अब बेटा क्या है, ये जो फर्स्ट केस है लोकसभा से पास होकर राज्यसभा ने भी पास कर दिया, बात खत्म हो गई, राइट? लेकिन दूसरा केस है रिजेक्ट कर दिया, तीसरा केस है अमेंडमेंट्स कर दी. जब बेटा राज्यसभा इस बिल में बेटा कोई अमेंडमेंट्स करेगी तो ये बिल फिर लोकसभा के पास जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल में ये अमेंडमेंट्स कर दी, और अब लोकसभा फिर इस बिल पे गौर करेगी कि जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट्स की हैं वो ठीक है या नहीं, राइट? सो जब ये बिल राज्यसभा के पास आ गया अमेंडमेंट्स के लिए, देन बेटा क्या होता है कि राज्यसभा में से यस टू द अमेंडमेंट्स, मींस एग्री कर गई उन अमेंडमेंट्स के साथ. दूसरी चीज है बेटा कि राज्यसभा हैज नॉट एग्रीड टू दोस अमेंडमेंट्स, राइट? राज्यसभा उन अमेंडमेंट्स के साथ एग्री नहीं की, राइट? अगर तो लोकसभा उन अमेंडमेंट से एग्री कर गई देन इट्स ओके, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एग्री नहीं किया तो बेटा इन सब केसेस में हम कहते हैं कि डेडलॉक हैज बीन क्रिएटेड. रिजेक्शन अमेंडमेंट की लोकसभा के पास किया, इसने नो कर दी, डेडलॉक, और यहाँ भी डेडलॉक, राइट? सो दिस condition is called that this situation is called that a deadlock has developed between the two houses, right? And the two houses are not agreeing on a bill, right? So then that deadlock needs to be resolved, and for that purpose there is one constitutional mechanism. According to the constitutional mechanism, the president shall invite a joint session of the two houses, right? That joint session is usually conducted in the central hall of the parliament as of now, right? वहाँ होता है. And when the joint sitting is held, then that joint sitting is presided over by the Speaker of Lok Sabha. If Speaker of Lok Sabha is not present, then it is presided over by the Deputy Speaker of Lok Sabha. If Deputy Speaker Lok Sabha is also not present, then it is presided over by the Deputy Chairman of Rajya Sabha, right? Bear this in mind that Chairman of Rajya Sabha never in no case, right, you can say, enters into the joint sitting, right? So he cannot preside, okay? So is this point clear, beta? He cannot preside this, right? So now the important thing is that beta, in India's parliamentary history, right? In India's parliamentary history, okay? Parliamentary history we can say, right? So far, 3 joint sittings of Lok Sabha, 3 joint sittings of the two houses, right? Of the two houses have been held, right? 3 joint sittings हुई हैं अभी तक, have been held, right? ये जो 3 joint sittings हुई हैं, first joint sitting बेटा जो हुई थी, we can say first, I would like to write here, the first joint sitting, it was there, right? So first one was held on 6th May 1961, right? 6th May 1961. The first joint sitting of the two houses of parliament was held, right? The purpose was to resolve a disagreement between the two houses, right? The purpose was to resolve a disagreement, right? Resolve a disagreement between the two houses, disagreement between the two houses, we can say, right, on amendment to, right, on amendment to the
right? Dowry prohibition, right? Dowry prohibition bill, right? Dowry prohibition bill, right, of 1959. Dowry prohibition act बना था बेटा, right? Amendment to the Dowry Prohibition Act of 1959, right? So 1959 में एक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना था और उस एक्ट में अमेंडमेंट करनी थी। उस अमेंडमेंट को लेकर के जो बिल आया था, उस बिल के ऊपर दोनों हाउसेस डिसएग्री हो गए थे। उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट सिटिंग कॉल की, राइट? और वो ज्वाइंट सिटिंग 6 मई 1961 को हुई, राइट? सो आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग कब हुई और उस किस पर्पस के लिए हुई थी, राइट? सो डॉरी प्रोहिबिशन बिल की को लेकर के हुई थी, अमेंडमेंट करनी थी एक्ट में। सो दैट इज द फर्स्ट, राइट? एंड द सेकेंड सिटिंग, second joint sitting, right? The second joint sitting, we can say, was held on 16th of May, right? 16th of May 1978, right? 16th of May 1978, right? पर क्यों हुई? Because of, right? Because of the rejection, right? Because of the rejection, we can say, by Rajya Sabha of the, right, of the banking, you can say, service commission repeal bill, banking service commission, right, repeal bill, banking service commission repeal bill, right, 1977. So 1977 में बेटा बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील करने के लिए, राइट? मैं यहाँ रिपील बिल लिख देता हूँ, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, राइट? उसको खत्म करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए, राइट? बैंकिंग सर्विस कमीशन को ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। उस बिल के ऊपर राज्यसभा डिसएग्री कर गई थी, राइट? सो उस चीज को लेके डेडलॉक हुआ था। उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए फिर सेकंड ज्वाइंट सिटिंग ये हुई थी, राइट? एंड ज्वाइंट सिटिंग में क्या हुआ था? बिल वाज पास्ड, क्योंकि लोकसभा तो एग्री करती थी और मेंबर ज्यादा लोकसभा के ही होते हैं, सो बिल ने तो पास होना ही था फिर, राइट? सो ये सेकंड केस था इसका ज्वाइंट सिटिंग का, राइट? एंड द थर्ड केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, राइट, दैट वाज देयर, right? Now let me take the third case, right? The third case of joint sitting, all right? That was held on 26th of March 2002. 26th March 2002 को जो हमारी third joint sitting हुई थी, right? Right? So it was held, right? It was held when, right? It was held when the motion to consider, right? When the motion to consider, right? Motion to consider the, we can say, prevention, right, of terrorism bill, prevention of terrorism bill, we can say 2002, seeking to replace, right? Seeking to replace the, right, prevention, right, of terrorism ordinance, right? Ordinance, right? Ordinance, right? So बेटा क्या हुआ था कि पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया प्रेसिडेंट ने। आपको मालूम है प्रेसिडेंट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 123 टू, you can say, issue an ordinance, right? To declare an ordinance. So ऑर्डिनेंस इशू किया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस था। उसके बाद बेटा फिर उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए ये बिल आया। उस बिल के ऊपर दोनों हाउसेस में डेडलॉक क्रिएट हो गया। सो देन भी ज्वाइंट सिटिंग हुई, राइट? सो 3 इंस्टांसेस हैं हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अब तक ज्वाइंट सिटिंग की, 61, 78 एंड 2002। ओके, सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस, राइट? सो मैंने आपको ज्वाइंट सिटिंग का करवा दिया है प्रॉपरली काम सारा, राइट? सो दिस इज देयर, राइट?
सो ये था हमारा, यू कैन से अबाउट दिस जॉइंट सिटिंग. ओके, सो दैट इज सर 2008 ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ शायद मे भी, है ना? नहीं बेटा, 2008 में होना था लेकिन वो हो नहीं पाई. ओके ओके, सर, हाँ, ओके. वो शायद ये वुमेन की जो रिजर्वेशन है इससे लेके था. यस सर. हाँ, तो दैट वाज देयर, राइट. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट बेटा, स्पीकर lays down necessary guidelines, right? The next point is that speaker lays down, right? You can say, पता नहीं कितना नंबर पॉइंट है आप देख लेना, right? Speaker lays down 24. हाँ जो भी है, necessary guidelines, right? Necessary guidelines we can say for the recognition of parliamentary parties, right? पार्लियामेंट में किसी पार्टी को रिकॉग्निशन देने का जो मैटर है, राइट, वो स्पीकर डिसाइड करता है पार्लियामेंट्री पार्टी हाउस के अंदर. ओके, सो ये पॉइंट हो गया. ये आपका 24th पॉइंट था ना, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ. ओके, सो दिस इज द 24th पॉइंट, राइट, एंड द नेक्स्ट इज द 25th पॉइंट, राइट. 25th पॉइंट है कि he decides on granting of recognition, right? He means speaker, right? He decides on, you can say, granting of recognition, right? He decides on granting of recognition to, right? Granting of recognition to, right? You can say the leader of opposition in Lok Sabha, to the leader of opposition in Lok Sabha, right? So अब देखो, इस लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्निशन नहीं दी हुई, राइट. तो ऐसे वो सुमित्रा महाजन वाली थी जब लोकसभा, वो नहीं दी उन्होंने रिकॉग्निशन, राइट. सो स्पीकर की मर्जी है, उसने देखना है, राइट. कैसे 1/10 मेंबर चाहिए होते हैं, राइट, स्ट्रेंथ किसी पार्टी की, कि उसको हम पार्टी ऑफ ऑपोजिशन का जो स्टेटस मिले, राइट, उसके लिए हाउस के अंदर 1/10 स्ट्रेंथ चाहिए होती है, राइट. सो द नेक्स्ट इज बेटा फॉलोइंग द, राइट, फॉलोइंग द, ओके, 52nd we can say constitution amendment, right, amendment act, right. Following the 52nd Constitution Amendment Act, Speaker has the power relating to the disqualification of a member on ground of defection, right. So Speaker has the power to disqualify a member, right, to disqualify a member of Lok Sabha, right, disqualify a member of, disqualify a member of Lok Sabha on ground of defection, right. ये हम कर ही चुके हैं इसको अच्छे से, on ground of defection. So that is the next point, right, defection. So this is the point number, you can say, क्या हो गया, 26 point हो गया. So now the next is that, okay, so the point number 27 is there, right. That is the speaker does not vote in the house except on rare occasions in case of equality of votes, right. So we can say speaker does not vote, right, does not vote in the house except on rare occasions, right, which is in case of equality of votes, right, in case of equality of votes, right. जब equality of vote होती है तब वो vote आता है, and the speaker's vote is known as the casting vote, right. So he has the right of casting vote,
राइट। सो कास्टिंग वोट अगर कोई पूछता है, वो वोट जो जब इक्वालिटी हो जाती है उसको ब्रेक करने के लिए जो स्पीकर द्वारा वोट डाली जाती है वो डिसीजन वोट होती है और उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। राइट। इट मीन्स अगर किसी भी बिल के ऊपर, राइट, लोकसभा के अंदर अगर इक्वालिटी हो जाती है, डेडलॉक बन जाता है, इट मीन्स स्पीकर डिसीजन इज फाइनल। स्पीकर डिसीजन फाइनल मीन्स कि जिधर स्पीकर ने वोट डाल दी तो वो वाला मैटर पास हो गया। राइट। सो दैट इज द पॉइंट। ओके। सो द नेक्स्ट यू कैन से, राइट, पॉइंट इज दैट, राइट। हाँ, इसमें बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सो फार नो स्पीकर हैज एक्सरसाइज्ड द कास्टिंग। राइट। So far, no speaker has exercised the casting vote. Okay, exercised the casting vote. Right? अभी तक किसी स्पीकर ने कास्टिंग वोट एक्सरसाइज नहीं की, पावर है लेकिन ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी। ओके, कैसे? सर मौका ही नहीं मिला उन्हें। हाँ, मौका ही नहीं मिला ना। सो so the next thing is, बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, राइट बेटा। Next thing is with the role of speaker with respect to the committees, right? The role of speaker with respect to committees, right? With respect to committees. Committees को लेकर के speaker का रोल क्या है? इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट है आपका जो, right? One is committees of the house function under the overall direction of the speaker, right? Committees of the house function under the overall direction, okay, of the speaker. जो हाउस की जो कमेटी है वो स्पीकर की ओवरऑल डायरेक्शन के अंदर काम करती है, राइट, ऑफ द स्पीकर। सो दैट इज द पॉइंट, राइट। पहला पॉइंट तो ये है आपका, राइट, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। ओके, सो दैट्स द पॉइंट, राइट। सो बेटा all such committees are constituted by the speaker. ऐसी सभी कमेटीज जो होती हैं, राइट, उनको स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करता है। All such committees, right, are constituted by the speaker. ऐसी कमेटीज को बेटा स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट, आर कॉन्स्टिट्यूटेड by the speaker. That is there, right? ठीक है, constituted by the speaker, right, or by the house, right? ये दोनों का पावर होती है, और by the house. House means लोकसभा, right? So ये भी होता है। Then next है बेटा कि speaker nominates the chairpersons of all parliamentary parties, right? So the second point is that the speaker nominates the chairpersons of all parliamentary committees, right? Speaker, right, nominates the chairpersons of all parliamentary committees. Okay, all parliamentary committees, right? So speaker उनके chairpersons को nominate करता है सभी parliamentary committees को, right? Next है बेटा all procedural problems, all procedural, right, problems in the operation of the committee or functioning of the committee, right, in the operation or functioning of the committees, right, of the committees are referred to the speaker, right, are referred to the speaker, right, for his directives, right. स्पीकर के आदेश देने के लिए इनको स्पीकर को भिजवाया जाता है अगर कोई ऐसी प्रोसीजरल प्रॉब्लम होती है तो, राइट। सो दैट इज देयर द पॉइंट, राइट। सो ये एंड नेक्स्ट है बेटा कि ही रिमेन्स द चेयरमैन ऑफ, राइट, मीन स्पीकर रिमेन्स द चेयरमैन ऑफ, राइट, स्पीकर रिमेन्स द चेयरमैन ऑफ
राइट, किसका चेयरमैन होता है? नंबर 1, राइट, दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी, सो स्पीकर विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट। वन थिंग इज दैट, राइट। एंड दूसरे नंबर पे है, राइट, सो ही विल बी द चेयरमैन ऑफ जनरल पर्पस कमेटी। हाउस की एक जनरल पर्पस कमेटी होती है, राइट, सो स्पीकर विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट आल्सो, जनरल पर्पस कमेटी, राइट। एंड तीसरे नंबर पे होता है बेटा कि he will be the chairman of the rules committee of the house, right? So these are the various committees of which the speaker remains the chairman, right? ये preliminary के लिए आपका बहुत important question है, right? So that is there. Hello, hello, बस आ जा तू को नहीं, अच्छा कोई नहीं, बस मैं बस सुनना वेला थोड़ी टाइम 5 मिनट, ठीक है। सो बेटा ये आज हमने कुछ चीजें स्पीकर के बारे में की, राइट, क्योंकि स्पीकर का जो रोल है दैट इज टू मच, राइट, वाइडर रोल विच द स्पीकर इज प्लेइंग इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। सो बेटा 2 points are still remaining, those we will discuss tomorrow, right, because मैं वो नहीं करना चाहता कि मैं आपके साथ फ्रॉड करूं, राइट, आधा अधूरा डिस्कस करके चला जाऊं, राइट। एक तो बेटा इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस की बात है जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें स्पीकर का रोल। एक होता है बेटा स्पीकर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द हाउस। ये 2-3 चीजें कल हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इट सल्टन स्टेटमेंट्स जो स्पीकर के बारे हैं, और इससे फिर हमारा कंप्लीट होगा। इससे तो ओके बेटा? यस सर। ओके सर। Okay, do you want to ask anything from today's lecture? नो सर, ऑल क्लियर। और सर वैसे भी सर लक्ष्मीकांत से बहुत बियॉन्ड हो गया है, तो बहुत ज्यादा बाहर हो गया। यस सर, ऑफ कोर्स, सर बहुत मैंने ज्यादा। कल ही पढ़ा था सर ये वाला, मतलब स्पीकर्स के पावर, सर उसमें सिर्फ 10 पॉइंट दे रखे हैं, और सर यहाँ पे तो सर आपने इतना सारा कराया, उसमें कुछ भी नहीं है सर। ये वो तो ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਆਇੰट्स रोल ਤੇ बस। सर कल पढ़े थे मैंने, सर वो 10 पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने बस, और यस बहुत ज्यादा मतलब ऊपर से उड़ाया हुआ है। वही होता है बेटा। और बेटा इन चीजों से आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, बात ये होती है। सर आपका वो यस बार-बार के क्वेश्चन से सर यूपीएससी ने बार-बार के क्वेश्चन पूछ के सर खत्म भी हो गए, उसके बाद अब वो सर अंदर से ही पूछ रहा है चीजें। यस तो अब यूपीएससी थोड़ा उससे बियॉन्ड चली गई है ना। यस सर। वैसे भी बेटा मुझे लगता होता है, पता नहीं, लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ के आप मेंस एग्जामिनेशन में आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स के लिए। एग्जैक्टली सर, लोग कहते हैं सर, मैंने कि वो तो डीडी बासु पढ़नी पड़ती है बाद में फिर। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ठीक है, नो डाउट, है ना। तो ये रहता है जी सर। चलो। हाँ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ क्वेश्चन ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇंस ਲਈ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। हाँ जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए अब स्पीकर के रोल पे के ऊपर, यस सर, यस सर। लेकिन आपने अगर लिखा है, आप अगर पढ़ोगे तो, है ना। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, सो होता है बेटा, बाकी तो सब ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पर्सन्स वही आप लोग, नवरीत, कमल, अमन, आई थिंक नवकिरण हैज लेफ्ट द क्लास, है ना। सर उसका उनका शायद डिस्कनेक्ट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, फोन डेड हो गया उनका, मैसेज आया हुआ। सो इज इट ओके बेटा? फिर मेरी क्लास भी डिस्कनेक्ट हो गई थी सर बीच में, थे पहले फिर मैं करती नहीं रही। नहीं, मतलब आई थॉट कि परहैप्स आपने किया हुआ है, शायद मत तभी आप छोड़ गए क्लास। नो सर, नो, मैंने निशांक को मैसेज पे अच्छा किया था, पर मैं लगातार ट्राई करती रही, फिर हो गया ज्वाइन। हाँ, वो समटाइम्स हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम, है ना। हाँ जी सर, नहीं बहुत कुछ ना है, मैं वैसे हमें नहीं कभी भी क्लास छड़नी, तो इंटरेस्टिंग होंगी ये क्लास। नहीं, मैं भी आज ऑफिस इसीलिए आया था क्योंकि वो घर में नेट की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं क्या, अदरवाइज आज फिर आपकी क्लास मिस हो जाएगी, वो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ एक्चुअली मेरे भी ना सर पहला डिपार्टमेंटल ना कुछ चल रहे हैं सेमिनार वगैरह, तो Okay. फिर
ਦਿਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੰਟਾ ਕੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यस यस यस, वो हो जाता बेटा। ਹਾਂਜੀ चलो राइट बेटा, फिर कल मिलते हैं हम। Sure, sir. ओके Okay, बेटा, thank you, टेक sir. केयर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।